So 16 finals on the final day of track and field as we welcome you for our live telecast from the MG Stadium in Udupi, Karnataka for the 18th National Youth Championship. These are the under 18 events, and the first of the event in the morning at 7:45 or 6:45 to be correct, when most of you are in bed and perhaps some of you having a hot cup of tea sitting in your drawing room and watching this telecast. The first event of the morning will be the 10,000 meters walk. India, of course, has done well in the walking events over the last 2 odd years. Sandeep Kumar in the 10,000 kilometers, Priyanka Goswami, and the introduction of the 17 of the walkers. Amit Kumar representing Chhattisgarh, Himanshu Kumar of Uttar Pradesh, Rajan Rupchandra Singh of Maharashtra, Sagarbhai Katara of Gujarat, Babendra Singh, Uttarakhand, Murugan, Tamil Nadu, and then down the order, Tushar Giri, Sabranathan of Tamil Nadu, Sachin of Haryana, and along with him is compared Sahil June, as I welcome my colleague Virender. Good morning, everybody, and the competitors here for the very first event of the last day of the 18th National. Hansraj Mahia from Rajasthan, Ram Devas from Rajasthan, Praveen from Rajasthan, Himanshu Kumar of Uttarakhand, and Prashant of Uttar Pradesh. So here we are with the race walk, 10,000 meter youth boys final. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आप सभी को सुप्रभात कहते हैं यहाँ से उडुपी के इस खूबसूरत स्टेडियम से। बहुत अच्छा मौसम आज सुबह यहाँ पर, और 10,000 मीटर रेस वॉक की पहली इवेंट यहाँ आयोजित होने जा रही है और टोटल 17 प्रतिभागी कॉम्पिटिटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So yes, the meet record, Vishwendra Singh at Raipur, 43 minutes 21 seconds, 21.99 seconds in 2019. The national record, Amit Khatri, Guwahati, 42 minutes 15.91 on the 8th of February 2021. The mark in front of them, 45 minutes flat. If they achieve that, they are on a flight to Tashkent. So we are now exactly at 6:46 by my watch, and as they set out on a pace over approximately 43-44 minutes. This is, of course, the first 60 seconds of the event, and although this is a foot race, it is different, as we said yesterday in our telecast for the 5,000 meters for the girls, that it is different from running in that one foot must appear to be in contact with the ground at all times, and race judges carefully assess this, and it's maintained throughout the race, typically held either on the road or on running tracks. This one is being held inside the stadium on the running track. Distances, of course, range from the 3,000 meters to the 100 kilometers. Imagine walking 100 kilometers with the rule being the same across. It is an event which is contested at the Summer Olympic Games and then down to the Commonwealth Games and the Asian Games. 17 starters. Walking, of course, is a wonderful exercise. You go to Virender, any city, not only in India but anywhere in the world, where around 5 o'clock, 5:30 in the morning you'll find the young and the old
And there is no age. There's no age for walking, isn't it? Because the best exercise that you can really have in any walk of life. बिल्कुल सही कहा आपने। अंतर सिर्फ जो सुबह हम घूमते हैं, वॉक करते हैं उसमें, और ये कंपटीशन में आप यहाँ एथलेटिक एरिना में देख रहे हैं, इसमें फ़र्क कितना, केवल इतना है कि जो हम सुबह घूमते हैं हम उसको वॉक कहते हैं, पैदल चलना, और इसको रेस वॉक कहा जाता है। और इसका आप एक्शन और स्पीड पेस जो यहाँ पर देख रहे हैं, और जिसमें प्रमुखता से, मुख्य रूप से जो है, लॉस ऑफ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए और साथ में आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है रेस वॉक कंपटीशन में। टोटल 17 प्रतिभागी फिलहाल, और यदि हम राष्ट्रीय कीर्तिमान की बात करें, 42 मिनट्स 15.91 सेकंड्स का वर्ष 2021 में अमित खत्री के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और मीट रिकॉर्ड जो है 43 मिनट्स 21.99 सेकंड्स का विश्वेंद्र सिंह के नाम से दर्ज है, जो कि वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। The sport of walking emerged from a British culture of long distance competition walking known as pedestrianism, which began to develop the rules that it is the basis of modern discipline around the mid 19th century. Early days, we started at 6:45. We are now at, why do I say 6:45? Yes, 6:45, that's right. Losing track of time here. 3 minutes, 35 seconds and plus from here on. It's a long, long journey for these young boys. Yesterday it was the girls over 5,000. Today it's the boys over 10,000. पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर लगातार सुबह इसी वक्त पर अपने टाइम पर कॉम्पिटिशन शुरू कर रहे हैं। और यदि हम देखें तो कल और परसों दोनों दिन सुबह का जो यहाँ का तापमान था वो 23 डिग्री 24 डिग्री के आसपास था। आज भी 24 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर है वो 79-80% ह्यूमिडिटी हो गई है। और निश्चित रूप से इस तरह से जब मौसम ज़्यादा ह्यूमिड होता है तो एथलीट ज़्यादा एग्जॉस्ट होगा, और आवश्यकता पड़ेगी इन्हें बीच में जो हमारा वाटर काउंटर है वहाँ से समय समय पर इनको जो है पानी और बाकी जो रिफ्रेशमेंट है उसकी उपलब्धता बराबर रहेगी। Well, 762 on your picture frame is Himanshu Kumar of Uttarakhand, but he's got a long way to go. We are under 5 minutes of this competition, and the main bunch of 4 plus 4, 8 of them, the early leaders of the pack. Himanshu now slipping back into the second position, the lead being changing hands. Wonderful synchronization. The lead now with Babendra Singh of Uttarakhand. So the two boys from Uttarakhand, Himanshu Kumar and Babendra Singh, the wonderful mountains of Uttarakhand, Dehradun, the capital. We got one of them already on the board. 721 was it? 27 it 27. is. Prashant of Uttar Pradesh, he received one red card with the knee bend. So yes, we've got plenty to talk to. 6 minutes of this competition underway. On a wonderful Sunday morning, the last day or the last morning of the 18th National Junior Athletics. Well, he's come from nowhere. Just picked up a glass of water. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. And these boys under 18, I'm sure went to bed early. Butterflies in the stomach. We got one more joining the two Uttarakhand boys. 525 being Amit Kumar of Chhattisgarh. The plains of India, Chhattisgarh.
the eastern part, the eastern belt of the country. But very clearly, Virender, the two boys from Uttarakhand. बिल्कुल, यदि हम रेस वॉक का पिछला इतिहास देखें या पिछले नतीजे देखें, प्रियंका गोस्वामी जो कि उत्तराखंड की हैं और उत्तराखंड के रेस वॉकर्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है राष्ट्रीय स्तर पर और काफ़ी अच्छे रेस वॉकर्स वहाँ से उभर कर निकले हैं देश के अंदर। और आज फिर यहाँ हम देख रहे हैं उत्तराखंड के 762 और 770, 772 भी 762 के साथ हिमांशु कुमार हैं और 770 पिप नंबर के साथ भावेंद्र सिंह है। दोनों ही उत्तराखंड के एथलीट हैं और एक अच्छा रेस वॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल भावेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं और उनके पीछे चल रहे हैं हिमांशु कुमार और तीसरे स्थान पर साथ में ही बिल्कुल चल रहे हैं अमित कुमार जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ का रेस वॉक में फिलहाल जो आगे एक नाम आ रहा है अमित कुमार के रूप में जो यहाँ चल रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ से भी रेस वॉकर जो है वो लीडिंग एथलीट्स के अंदर, लीडिंग रेस वॉकर्स के अंदर नजर आ रहे हैं। Yes, Uttarakhand, the state in the northern part of India, often referred to as Devbhumi, the land of gods, and plenty of temples. Uttarakhand is known for its natural environment of the Himalayas, the Bhabar and the Terai ranges, and it borders the Tibet Autonomous Region in the north. Well, when you talk of sports in Uttarakhand, walking and running, essentially the 5,000, the 10,000 and the marathon. One name which comes to mind very easily in the 5 and the 10,000, who is now a renowned coach, he trains the marathoners, is Surendra Singh of the army, retired as a Subedar Major. It's still the same three. They opened up a sizable lead. We also have Sabarithan of Tamil Nadu now lying in fourth position, but he's got about 25 meters. He's tiring a wee bit there. The pace obviously not in the same vein as these three. It's the same combination. The combination of Himanshu Kumar, along with him Bhabendra Singh, and then on the left side Amit Kumar of Chhattisgarh. Clearly a strategy by the two Uttarakhand boys. One of them perhaps setting the pace out here, the other close on his heels, and in between now you have Amit Kumar of Chhattisgarh. So, Virender, one, a state in the plains, and two, from the mountains of this country. बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर रेस वॉक का जो स्कोरबोर्ड यहाँ दिख रहा है, बिब नंबर 577 जो कि साहिल जोन हरियाणा के हैं, उन्हें लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट का एक रेड कार्ड मिल चुका है और 727 के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें नी बैंड का दूसरा जो है रेड कार्ड मिल चुका है। 727 के साथ हैं प्रशांत उत्तर प्रदेश के। वो सन का It's a wonderful morning. Virender shared the temperatures 24 degrees. The wind 5 kilometers, so there isn't a stiff wind aiding the athletes. Far side, look at that lead now. He seems to be in a hurry. Wants to have an early breakfast, I presume. Finish this, go back to the room, have a breakfast, catch up with sleep. Amit Kumar gulping down glasses of water at the end of every 400 meters. We haven't seen the two Uttarakhand boys doing that. But yes, the two Uttarakhand boys and many more joining the party on the board now. And here 697 Sabarinathan of Tamil Nadu. He also received a loss of contact from the two judges.
there is two red cards on the board. So Babendra Singh of Uttarakhand takes that early lead. Well, we got more company on the board there. And this company obviously is not to the liking. Prashant from Uttar Pradesh picking up two of the reds. Likewise 697. Or is it 647? Oh, wonderful sight. What a sight this is. The sun peeping into the eastern side of Udupi, up from the hills of Manipal. Remember, the education town or the education hub of Udupi, Manipal, just across from where the sun is peeping out. Welcoming these athletes, welcoming all of us on a wonderful Sunday morning. The lead continues to remain the same. Babendra Singh of Uttarakhand picks up water for the first time. Has an early morning bath. There isn't a shower, so all that he does is picks up a bottle of water, showers himself, and then carries on with that journey. That journey, which now is into the 14th minute of the walk. बिल्कुल इनको सुबह सुबह आज पानी की आवश्यकता ज़्यादा ज़रूर पड़ने वाली है, क्योंकि ह्यूमिडिटी 79-80% है और ऐसे समय में पसीना आपका जो है ज़्यादा निकलेगा, बॉडी एग्जॉस्ट होगी और 10,000 मीटर का डिस्टेंस इन्हें कवर करना है। और फिलहाल बाबेंद्र सिंह उत्तराखंड, हिमांशु कुमार उत्तराखंड और अमित कुमार छत्तीसगढ़। Yes, the high mountains and the rivers of Uttarakhand attract many tourists and adventure seekers. It's also a favorite destination for adventure sports such as paragliding, skydiving, rafting and bungee jumping. But look at Babendra Singh all by himself into minute number 15, 14 minutes, 17 seconds. He's all by himself, taking that early lead. Yeah. Oh, what a sight this is. Beautiful. Captured so well by our camera team and the producer. A lot of greenery around this complex, the Mahatma Gandhi Stadium at Ajarkadu, a city, Udupi, which is known for its wonderful cuisine, its temples. We were very fortunate yesterday to have darshan of Lord Krishna. And of course, a nice little meal of rice, sambar, and some other ingredients along with lassi in the afternoon. But yes, it's been a wonderful 3-day event out here for all of us, including these athletes. Hotting up now. Babendra Singh, where is his compatriot? He's now in third position. And Amit Kumar close on the heels with about 20 meters separating these two. The leader has not picked up a red card so far, which goes to show that he has been in training. Tiring there now, coming back from the third position, slipping slowly into the second position is Himanshu Kumar, who started off with that lead, now lying in second position. The pace has been set very well by these two Uttarakhand boys. We're talking about sports in Uttarakhand. Virendra, you'll be surprised to note that the Uttarakhand cricket team has been doing well over the last 2 or 3 years. My friend Suru Naik from Mumbai was their selector, chief selector. Uttarakhand, as we all know, the capital is Dehradun, which is known for its many institutions, the Indian Military Academy, and so many of the others, public sector undertakings, the Jim Corbett Park, and of course Uttarakhand is known for its sports persons. Here is one of them, Babendra Singh, in the 10,000 meters walk. The first final
of 16 finals slated here on the final day. बिल्कुल उत्तराखंड राज्य के ट्रिप नंबर 770 बाबेंद्र सिंह बिल्कुल अपनी बढ़त बनाकर यहाँ पर चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी लीड उन्होंने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। एक अच्छे रेस वॉक का यहाँ पर प्रदर्शन। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर यदि आप देखेंगे तो 770 बाबेंद्र सिंह का नाम वहाँ नंबर नज़र नहीं आ रहा है। ये स्पष्ट यहाँ पर दर्शा रहा है कि उनका रेस वॉक जो है और उनको जो ट्रेनिंग मिली है बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छी लीड के साथ आगे चल रहे हैं। और इस समय हिमांशु कुमार उत्तराखंड के दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तीसरे स्थान पर अमित कुमार 525 छत्तीसगढ़ के चल रहे हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान के बीच में यदि देखें ज़्यादा फासला नहीं है, इंतज़ार करना होगा आखिरी क्षणों का। 25 चक्कर इन्हें लगाने हैं 10,000 मीटर की दूरी तय करने के लिए। 400 मीटर का एक लैप है और फिलहाल बाबेंद्र सिंह बिल्कुल अग्रसर अपने लक्ष्य की ओर। Watch the back toe, which does not leave the ground until the heel of the front foot has touched, and the violation of this rule is known as the loss of contact. Look at that. Repeat. That the back toe cannot leave the ground. That's the important factor until the heel of the front foot has touched, and violation of this rule is known as the loss of contact. Very different from running, remember. Not easy, Virender, not easy at all. Try doing what I just mentioned and you will get a couple of red cards in no time at all. इस लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ साथ जो दूसरा एक और बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है इसमें, वो ये है कि आपको ये जो कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ मेंटेन करना है, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपकी नी बेंड ना हो। Yes, also the other rule which Virendra just mentioned requires that the supporting leg must straighten from the point of contact with the ground and remain straightened until the body passes directly over it. And these rules, of course, as you watch there on your picture frame, are judged by unaided human eye. These are judged by unaided human eye. Makes it so difficult for the judges, and athletes, of course, regularly lose contacts for a few milliseconds per stride. And that's the reason why walking, to me, Virender, is far, far different and difficult compared to running. बिल्कुल आपने सही कहा है यहाँ पर। और रनिंग में तो आपके पास में जो है एक पेस आपको मिल जाती है जिसके अंदर आपकी बॉडी का ही जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो रेगुलर आप उसके साथ एक रिदम के साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो अहम बात इनको अपने ध्यान देना है कि लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट भी ना हो और नी बेंड ना हो। इसीलिए ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट इवेंट कहा जा सकता है। We are halfway through the event, 20 minutes, 19 seconds and going on. They start with 17 athletes: Amit Kumar, Himanshu, Rajan, Sagarbai, Babendra, Murugan, Tushar, Sabarnathan, Sachin, Sahil, Hansraj, Ramnivas, Praveen, Himanshu Panwar, Sachit, Sachin and Prashant. But this boy, he seems to be lapping now. He seems to be lapping one of the walkers, Sahil June of Haryana, and he 770 Babendra Singh all by himself. You know, Virendra, when people go for a walk in the morning, most of us have company. 1, 2, 3, 4, 5 एक गैंग होती है जो सवेरे हम घूमने चलते हैं। बिल्कुल, साथ में गपशप भी चल रही होती है और साथ ही साथ but here for Babendra, he is the lone ranger all by himself. On his heels is his partner Himanshu Kumar. I'm sure they train together, but Babendra says बाद में मिलेंगे, फिलहाल तो मैं अकेले चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अग्रसर हैं। देखिए कितनी अच्छी लयबद्ध रेस वॉक का मुजाहरा कर रहे हैं। और इधर देखिए यहाँ पर 3 रेड कार्ड नज़र आ रहे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। वेब नंबर 691
Or is it 697? इट इज 697 सबरीनाथन ऑफ तमिलनाडु। और निश्चित रूप से उन्हें पेनलाइज किया जाएगा, पिट लेन में डाला जाएगा। I'm sure he's not very keen for an early breakfast. Breakfast can wait, but not for this boy. Babender Singh, 23 minutes, going strong. He keeps on looking at his clock, the watch. ऐसा लगता है वीरेंद्र, Babender seems to be an accomplished walker. He seems to be a boy who knows what he is doing. बिल्कुल, Unlike, यहाँ देखिए वो बार बार अपने वॉच के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपना पेस जो है वो मेंटेन करना है, उसकी तरफ वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हर जो अच्छे एथलीट हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के या मिडिल डिस्टेंस के, वो अपनी पेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और हर लैप का जो है वो देखते रहते हैं कि कितने मिनट्स में, कितने सेकंड्स में वो लैप जो है कंप्लीट कर रहे हैं। 25 laps. 25 laps of this ground out here. 770 seems to be wanting to join the company of the Red Boys. When you talk of Red, it is Liverpool and Manchester United. Sadly, Liverpool lost to Bournemouth yesterday. They lost to Bournemouth yesterday in the English Premier League. And these are the Reds. Yes, the first of them comes up there for 770. That is Babendra who is leading. पहला रेड कार्ड उन्हें यहाँ पर मिल गया है, बाबेंद्र सिंह। So yes, he'll have to be a bit careful because he's into the 24th minute of the walk. I suspect about 20 minutes from here on, Virendra, because if you go by the national record, which is 42 minutes 15.91, the meet record 43 minutes 21. So these boys would hover around 43, 44. What they need to achieve is 45 minutes for a qualification for Tashkent in Uzbekistan. बिल्कुल, जो पेस फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है 770 का, और बोर्ड पर एक रेड कार्ड भी उनको मिल चुका है, लेकिन उन्हें ध्यान देना होगा अपने टेक्निक के ऊपर। और साथ ही जो पेस यहाँ नज़र आ रहा है उसके संबंध में कहना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन से 2 दिन जो लगातार अपने यहाँ गुजरे हैं, उसमें पहले ही इवेंट में जो एथलीट हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है, इसको अचीव किया है क्वालिफाइंग मार्क को। आज भी यही उम्मीद, ये तीसरा और अंतिम दिन, और बाबेंद्र सिंह लगातार आगे एक अच्छे रेस वॉक का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। दूसरे एथलीट रेस वॉकर जो हैं हिमांशु कुमार उत्तराखंड के दूसरे स्थान पर लगातार बने हुए हैं। एक और यहाँ पर लॉस ऑफ कांटेक्ट का मुझे उन्हें पैडल दिखाते हुए ऑफिशियल नज़र आए हैं। देखना होगा कुछ ही समय पश्चात स्कोर बोर्ड पर कि वहाँ पर क्या अगला रेड कार्ड 770 के सामने लगता है। These are aspirants for the future. These are aspirants for the senior pros, and from here on they'll obviously eye some of the big events of the international calendar. The Olympic Games, of course, the race walking appeared in the modern Olympics way back in 1904 in the form of a half mile, which is 804.67 meters walk in the all-round competitions, the precursor to the 10-event decathlon. And in 1908, standalone 1500 meters and 3000 meters race walks. Can you imagine? 1500 meters race walk and a 3000 meters race walk appeared in 1908, and excluding 1924, there has been at least one race walk in every Olympic Games ever since then. That's the importance, Virender, for the walking event at the Summer Olympic Games. Women, of course, race walking became an Olympic event in 1992, following years of active lobbying by the female internationals. So yes, walking now is an integral part of the world body and encompasses both men and women. The leader there of the pack, Babendra, water
a shower, and a water to drink. 28 minutes into this event, close to 15 odd minutes remaining for Babendra Singh. He needs to keep his eye on the board. He's got one red for a violation. Obviously won't want to put pressure on himself by another red. He's done so well. He's walked beautifully. He's got all the good styles that a walker can dream of. And his march continues out here. It's a wonderful, wonderful atmosphere for walking here at the MG Stadium, the Mahatma Gandhi Stadium in Udupi. The first race or the first walking event of the morning, after which we have 15 more finals on the final day. And Virendra, he seems to be lapping some of them the second time, which is phenomenal. That's the difference between him and the other walkers. And this is where the others will have to start learning from the likes of Babendra Singh. बिल्कुल, यहाँ हम चाहेंगे अभी फिलहाल कि हमारे कैमरामैन जो हैं वो स्कोर बोर्ड को जरूर यहाँ दिखाएं ताकि स्थिति पता लग सके. Well, it's not the cameraman, it's the producer who's got to show us the scoreboard. Because he's got about 5 or 6 or 15 cameras from which he has got to pick up the shot. So it's the producer who decides which shot he's got to show you. बिल्कुल बिल्कुल, प्रोड्यूसर ही निर्देश देंगे उन्हें कि आप जो है बिल्कुल इधर देखिए. आप 770 के सामने फिलहाल एक ही रेड कार्ड नज़र आ रहा है और 697 जो कि सबरीनाथन जिन्हें 3 रेड कार्ड मिल चुके हैं, पैनलाइज भी वो हो चुके हैं, और 727 प्रशांत उत्तर प्रदेश के. फिलहाल स्थिति आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है और बहुत जल्द अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने जा रहे हैं बाबेंद्र सिंह उत्तराखंड के. उनके पेस में थोड़ा अंतर आ गया है. उन्हें एक रेड कार्ड मिलने के बाद देखेंगे थोड़ी सी लय उनकी जो है उसको प्रभावित हुई है. You know, Virender, while we are watching Babendra Singh there into the 29th minute or 30th minute, in fact, of this competition, I was going through Google and I found that there are 25 styles of walking. There are 25 styles of walking. Amble, which is walk leisurely. I'm obviously not going to read out all 25 of them. Keren, which is move at a high speed and in an uncontrolled way. Falter, which is moving hesitatingly as if to give away. Flounder, which is move clumsily or struggle to move as in mud or water. Limp, which is walk impeded by some physical activity. Lumber, which is move heavily or clumsily. So the point I'm making is there are various styles of walking. But here with the rules in this competition, walking is obviously limited to a certain style. And that's what we are watching on Babendra Singh. Beautiful, isn't it? On the picture frame, only one person. It gives you an impression कि और कोई है ही नहीं यहाँ पर. बिल्कुल आगे, सबसे आगे बिल्कुल अपने आप को लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए बाबेंद्र सिंह. आप रेस वॉक की स्टाइल्स और टेक्निक्स की बात कर रहे हैं. यदि हम इंडियन रेस वॉकर्स को देखें और वहीं पर हम जापानीज और चाइनीज को यदि हम देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखता है. बाबेंद्र सिंह 770 उत्तराखंड के अग्रसर. नजरें बार बार बाहर की तरफ उनकी जा रही हैं. शायद उनके कोच वहां पर हैं जो उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं. 17 कॉम्पिटिटर इसमें थे और फिलहाल अभी आपके सामने हैमर थ्रो के ये कॉम्पिटिटर्स. टोटल 14 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हैमर थ्रो बॉयज अंडर 18 में. और
Site 9E, Cinemas Art, Karnataka. 683, Karnataka, 68. Rajasthan. That's right. That's right. Centimeters, set by Steve School. हैमर थ्रो के प्रतिभागियों का आप सभी से परिचय कराने के बाद एक बार पुनः ट्रैक पर हम हाजिर हैं 10,000 मीटर रेस वॉक बॉयज अंडर 18 के साथ। और बाबेंद्र सिंह उत्तराखंड के काफ़ी अच्छी लीड के साथ आगे चल रहे हैं, आसपास कोई भी नहीं है और जीत उनकी निश्चित है, परंतु केवल सिर्फ उन्हें यही ध्यान देना होगा कि बाकी के रेड कार्ड्स उन्हें ना मिलें और वो पेनल्टी एरिया में ना जाएं। जब इतना बढ़िया काम किया है 33 मिनट्स के पास में भवेंद्र सिंह वॉक कर रहे हैं, तो इट विल बी अ पिटी दैट आफ्टर 34-35 मिनट्स he picks up a few more red cards. So that's not what he wants, I'm sure. But you know, when you're watching him in action and when we're talking about race walking is an event where even films have been made. In 1966, the film Walk, Don't Run, the famous actor Jim Hutton, and there you are. Oh, 697 is in big trouble. Is in absolutely big trouble there. And that is Sabrinathan of Tamil Nadu. So I'm going back and we'll try and show you what that means in the pit. Remember, rules have changed over the years. And as I said, in 1966, the film Walk, Don't Run, Jim Hutton plays a race walker competing in the Tokyo Olympics. Cary Grant, there you are, picks up a warning there and now sets off again. And in 2021, the Queen Prince actress Kristen Bell plays a 3-time gold medal Olympic race walker and extreme couponer. So, walking has become a part of films in Hollywood also. 35 minutes or close to 35 minutes of action here in the 10,000 meters walk. I make it about 10 odd minutes to go for the walkers. The leader of the pack, in fact, Amit Kumar, Babendra Singh. So Virendra, the leader, Babendra, and you have got Amit Kumar, I suspect, in the second position. सबरीनाथन, जिन्हें 4 रेड कार्ड आपने थोड़ी देर पहले देखे थे स्कोरबोर्ड के ऊपर, उन्हें 1 मिनट के लिए पेनल्टी एरिया में रखा गया है पिट लेन में। 1 मिनट बाद उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। और उसके साथ ही एक और यहाँ पर एथलीट नज़र आ रहे हैं, प्रशांत, उत्तर प्रदेश के, जिन्हें फिर पिट लेन के अंदर आना पड़ा है। 1 मिनट के लिए वे यहाँ पर रहेंगे। ये एक रूल जो रेस वॉक के अंदर लागू किया गया वो केवल इसलिए कि हम इन रेस वॉकर्स को बाहर ना करें, डिस्क्वालीफाई ना करें, मौका दें आगे और अपने वॉक को सुधारने का। Well, you could clearly see him shaking his head in disbelief. He's not come here to be standing there and for 60 seconds watching everyone go by. आपके आजू बाजू में से आपके साथ में जिन्होंने शुरुआत की थी, they're all walking away and you're standing there in the pit for 60 seconds. He'll say, यार मैं तो सवेरे उठ के ये करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन यदि आप जो लॉस ऑफ कांटेक्ट और नी बेंड के जो 2 रूल बहुत ज़्यादा सख्ती से यहाँ पर देखे जाते हैं जजेस के द्वारा, यदि इनका वायलेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पेनलाइज्ड होना पड़ेगा, पिट लेन के अंदर जाना पड़ेगा। 770 बाबेंद्र सिंह लगातार आगे और 36 मिनट से हम 37वें मिनट में प्रवेश कर रहे हैं और अगले लगभग 6-7 मिनट के अंदर जो है नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। परंतु फिलहाल बाबेंद्र सिंह के नज़दीक कोई भी नहीं है, जीत उनकी निश्चित है, लेकिन उन्हें कंसंट्रेट करना होगा कि जो एक क्वालिफाइंग मार्क यहाँ रखा हुआ है 45 मिनट्स का, उसके
के आसपास या उसको अचीव कर लें, तो आज जो तीसरा और अंतिम दिन का पहला इवेंट है, तो उस कड़ी में जो पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर जो एक ट्रेंड बन गया है कि पहले ही इवेंट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव किए हैं, तो आज भी वो वापस पुनः तीसरे और अंतिम दिन यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। You know, I'd like to explain that rule about the pit very clearly for our viewers here on this telecast. The pit lane work, how does it work? The pit lane work, this is an innovation which is currently not used. I'm repeating, not used in the World Championships or in the Olympic Games, but will be in use at the World Race Walking Team Championships in Taiking and all the under 20 competitions. Now, to explain that rule, which Virender has done, when an athlete is given 3 red cards, rather than this leading to disqualification, they are taken to a pit lane, which we just saw a few seconds back, where they serve a time penalty dependent on the distance of the race. 1 minute for 10 kilometers, 2 minutes for 20 kilometers, and 5 minutes for the 50 kilometers. This, of course, is what it is. The athlete then joins or rejoins the race, and then they receive a 4th red card. This will then lead to the disqualification. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर ये हमारे दर्शकों को बताया है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँच नहीं पाती हैं। But you know, I like this rule. जैसे आपने एक्सप्लेन किया था, it gives an opportunity to the race walkers rather than being disqualified and going back to the stadium or the hotel and then sitting down and crying and saying मुझे मौका नहीं मिला. Whereas here, because there is no disqualification, you are allowed to continue to participate, and that's the joy. That's the joy. एक अवसर क्या होता है कि यदि किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जब इसके रिजल्ट्स सामने आते हैं, उस रिजल्ट्स में उनके सामने जो है DQ लिखा रहता है। DQ मीन्स डिस्क्वालीफाइड। वो ये नहीं चाहते कि रिजल्ट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं उनके नाम के सामने डिस्क्वालीफाइड लिखा गया हो। दूसरा वीरेंद्र, इसका एडवांटेज ये है कि जो इंटरेस्ट है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, इंटरेस्ट जारी रहेगा और आपके पास मौका है अपने आप में अपने वॉक को सुधारने का और फिनिश करने का अपने इवेंट को। एक चार्म होता है हर एथलीट के अंदर, हर प्रतियोगी के अंदर, कि वो जो भी इवेंट कर रहा है ट्रैक पर है तो वह उसको पूरा कंप्लीट करे, फिनिश करे। बिल्कुल, ये भी उनके मन में रहता है कि हम इसे जीते, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी जीते। और यहाँ देखें, पिट लेन में डाला गया था प्रशांत को, जिन्हें 1 मिनट के लिए पेनलाइज्ड किया गया था और उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है। So just when we were talking of the interest, but there has to be some rule at the end of the day. You can't keep on allowing someone to keep on breaking rules. आपको मौका दिया जा रहा है, लेकिन उस मौके को भी यदि आप नहीं भुनाएंगे, फिर भी गलतियां करेंगे, तो फिर आपको उसका जो अवसर है वो आपको भुगतना पड़ेगा। But this boy has been brilliant. Babendra Singh, Uttarakhand, absolutely brilliant. No one on the picture frame. Now you got someone out there. Is it Amit Kumar in second position? Is it someone whom he has already lapped? His compatriot there, Himanshu Kumar, is, I'm sure, in second position, 762. But this boy, absolutely supreme. How long has he been going on? लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उनको अपनी रेस वॉक में। अंतिम क्षण यहाँ पर इस 10,000 मीटर कंप्लीट होने में, और यही वह मौके होते हैं या यही वह समय होता है जब आप अपनी पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सही समय दें, और वहीं पर गलतियां हो जाती हैं। करीबन 5 मिनट बाकी होंगे मेरे हिसाब से। 42nd मिनट चल रहा है, तो 3-4 मिनट का समय बाकी होगा फॉर Babendra Singh to finish this event and take the gold. The big question will be, has he achieved that mark of 45 minutes to qualify for the Asian Youth? He's got a chance there. I just heard the bell ringing.
as he enters, I suspect, the final 400 meters of this, the 10,000 meter walk, the first walk of the morning. बिल्कुल, यदि हम काउंटडाउन टाइमर पर उधर ध्यान दें तो 42 मिनट्स वहाँ पर दिखा रही है टाइमर, और जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 45 मिनट्स का है। 400 मीटर का आखिरी लैप, जिसमें 200 मीटर आखिरी बचा हुआ है उनका। लास्ट कर्व की ओर बढ़ रहे हैं हिमांशु। मौका है उनके पास आज एशियन यूथ के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क है उसको अचीव करने का। So all by himself, he's been a wonderful athlete to watch here in these 43-44 minutes plus. We'll obviously wait for the final time when he finishes, but right from the very beginning, वीरेंद्र, मेरे हिसाब से पहले सिर्फ 400 मीटर में वो सेकंड पोजीशन में थे भूपेंद्र सिंह, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये निश्चय कर दिया कि मैं लीड लूंगा और मैं वो लीड बरकरार रखूंगा। बिल्कुल, देखिए होम स्टेट में एंटर कर चुके हैं भूपेंद्र सिंह, बिल्कुल सीधे फिनिश लाइन की ओर। मौका है उनके पास नए कीर्तिमान का, परंतु नहीं, बहुत देर हो चुकी है। लास्ट लैप में उनके पास मौका था और 43 मिनट्स 34-35 सेकंड के आसपास का उनका टाइमिंग है। हमें इंतजार करना होगा ऑफिशियल रिजल्ट का। But in any case, according to me, although his clock 43 minutes 34.25, it may not mean a meet record, but he's at least achieved the qualifying mark of 45 minutes. That's important. बिल्कुल। And Himanshu Kumar, his compatriot, comes into second position. He's clocked under 45, I suspect again, 43 minutes 59.63. So he should, the two Uttarakhand boys have achieved the qualifying mark of 45 minutes. That's the beauty. That's the beauty for these two Uttarakhand boys, who I'm sure will celebrate their victory 1 and 2. बिल्कुल, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले 2 दिन के पहले इवेंट जो सुबह सुबह हुए थे, सभी में एथलीट्स ने, जो लीडिंग एथलीट्स थे, विनर्स थे, उन्होंने अचीव किया था। और तीसरा दिन भी, जो कि अंतिम दिन है इस प्रतियोगिता का, तो वहाँ पे भी शुरुआत एक अच्छी हुई है और एक अच्छे टाइमिंग के साथ जो है दोनों ही उत्तराखंड के रेस वॉकर्स भूपेंद्र सिंह और हिमांशु कुमार, जिन्होंने अचीव किया है क्वालिफाइंग मार्क को। और ये तीसरे स्थान पर फिनिश कर रहे हैं अमित कुमार छत्तीसगढ़ के। पहली बार ये मौका होगा छत्तीसगढ़ का कि यदि हम स्कोर टेबल पर देखें या रिजल्ट्स नतीजों पर देखें रेस वॉक के अंदर, छत्तीसगढ़ के अमित कुमार 44 मिनट्स 53.56 सेकंड्स, और इन्होंने भी जो है वह क्वालिफाइंग मार्क को अचीव किया है एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए। You know, Virender, the point I have been making over the last 3 days and at other events is that we are not taking away anything from our athletes of the 1940s, 50s, 60s and later. But now the time has come where these athletes are saying, हमें जीतना है। बिल्कुल, हमें जीत के बताना है कि हम आ रहे हैं छोटे छोटे गांवों से, कस्बे से, लेकिन हमारे में वो शक्ति है to show this nation and the world that it doesn't matter from where you come. I have the inclination to win. I have the inclination to do well, not only for myself. वो फौज में कहते हैं नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट प्रिंसिपल या स्पोर्ट्स में भी अप्लाई हो जाता है। जी हाँ, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, देश पहले, यही भावनाएं खिलाड़ियों के अंदर हमेशा ही जागृत रहती हैं और प्रयास भी यही रहता है कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एक अच्छा प्रदर्शन करें और यहाँ से क्वालिफाई करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। ख्वाब ओलंपिक्स तक जाने का हर खिलाड़ी अपने मन में संजो के रखता है। निर्भर करता है उसके प्रैक्टिस और उसके डेडिकेशन पर, उसके समर्पण पर, कि वह कितना अपने आप को समर्पित करता है और कितना डेडिकेट करता है और कितने अच्छे से
अपने कोच के द्वारा दिए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉलो करता है। The other thing, Virender, is that for 45 minutes you're walking alone. You've got a task in front of you, you're walking alone, and you have to take care. A normal morning walk that you and I do, we have no rules to follow. But here, for these boys and girls over 45 minutes, there was a rule to be followed. And that's the most difficult part. बिल्कुल, सुबह जब आप घूमने निकलते हैं तो यार दोस्त आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, हर एक से हाय हेलो आपकी हो जाती है, हर एक से आप दो चार बातें कर लेते हैं। परंतु यहाँ कंपटीशन में आप देखें, आप यदि लीड कर रहे हैं और आपके साथ में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, आपको अकेले ही आगे चलना है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित है आपका कि आपको जीतना है और जीत भी आप दर्ज कर लेते हो। यही एक बहुत बड़ी खूबी है और बहुत बड़ी बात है एथलेटिक्स के अंदर और खेलों के अंदर। So we'll give you the results again. Babender Singh, 43 minutes 34.25. Himanshu, also Uttarakhand, 43 minutes 59.63. Amit Kumar, Chhattisgarh, 44:53.56. And Sachin, missing the 45-minute mark by just 0.6 year to finish in 4th position. पहले दिन जो पहला रेस वॉक हुआ था 3000 मीटर का, उसमें भी पहले 4 रेस वॉकर्स ने जो है वो क्वालिफाइंग मार्क को अचीव किया था और आज ये अंतिम दिन है। अंतिम दिन में भी रेस वॉक में पहले जो 4 विजेता रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उन्होंने पहले 3 जो हैं उन्होंने इस क्वालिफाइंग मार्क को अचीव किया है। एक अच्छा प्रदर्शन और एक सफल चैंपियनशिप यहाँ पर अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ती हुई। टोटल 16 फाइनल आज आयोजित होने हैं। रेस वॉक 10,000 मीटर की अभी अभी यहाँ पर संपन्न हुई है और मैदान पर हैमर थ्रो के फाइनल चल रहे हैं मैन यूथ के। हैमर थ्रो का ये फाइनल इवेंट, जिसमें टोटल कुल 14 प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिलहाल 642 शिवराज राजेश यादव महाराष्ट्र के और रेड फ्लैग यहाँ पर नजर आया है। फाउल थ्रो, थ्रोइंग इवेंट्स के अंदर चाहे वो शॉर्ट पुट हो, डिस्कस हो या आपका हैमर थ्रो हो, जो कि रोटेशन के साथ, टेक्निक के साथ थ्रो किए जाते हैं। कल भी हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ मिलिंद वागले जी आपको समय समय पर इनकी टेक्निक्स और इसके बारे में बताते रहे हैं। प्रॉपर रोटेशन और रोटेशन के साथ जो आपकी स्पीड और परफेक्ट टाइम ऑफ रिलीजिंग द इक्विपमेंट एट ए पर्टिकुलर एंगल, वही जो है आपको एक अच्छे डिस्टेंस की तरफ ले जाता है। लगातार 3 प्रतिभागी और तीनों को यहाँ पर रेड फ्लैग हमने उठते हुए देखा है। फिलहाल नरपत सिंह राजस्थान के अपने इस अटेम्प्ट को परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते हुए, दूसरा राउंड ये चल रहा है फिलहाल हैमर थ्रो बॉयज अंडर 18 में। मैंने इंटरनेट पेज वाले नरपत सिंह 683
का ये प्रयास विफल रहा है। इसके पश्चात आ रहे हैं गुरु यादव उत्तर प्रदेश के, बिब नंबर 753। हैमर थ्रो का राष्ट्रीय कीर्तिमान नितेश पुनिया के नाम से है 81.47 मीटर्स के साथ, जो कि वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। और दमनीत सिंह का मीट रिकॉर्ड है, दमनीत सिंह के नाम से दर्ज है 72.75 मीटर्स के साथ। और क्वालिफाइंग मार्क एशियन यूथ के लिए जो रखा गया है वह 64.90 मीटर्स का है। गोलू यादव उत्तर प्रदेश के, और उसके पश्चात फिलहाल अंकुश हरियाणा के। Virender, while the discus throw is on, I'm also watching some the hammer, Hammer throw is correction. on. The hammer throw is on. My eye is also outside the what I'm seeing on the monitor here. The 10,000 meters walk is still on. 1, 2, 3, 4, 5 have finished. They've gone back perhaps to their hotel rooms, and some of the others are still walking, which means this event now is about 55 minutes. तो पहले जो खत्म होने के बाद करीबन 12 मिनट अभी भी चल रहे हैं। जी हाँ, लेकिन फिलहाल एक एथलीट यहाँ पर जो है पिटलैंड के पास भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरी नज़र पड़ रही है रेस वॉक जजेस की ओर, जिन्होंने अपने कदम जो हैं वह रेफरी की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ये संकेत इस बात का कि रेस वॉक इवेंट यहाँ पर अब संपन्न हो चुका है। हैमर थ्रो का फाइनल चल रहा है और बिब नंबर 556 अंश हरियाणा के। सफल प्रयास, व्हाइट फ्लैग अप। 14 of them as per the list starting off in this, the hammer throw final, one of the 16 finals. We've had one final gone through in the morning, which was the 10,000 meters walk. Karthik representing Uttar Pradesh. The most complex of the throwing events, the hammer throw, and probably demands more skill from the platform than any other event in the track and field program. 47.01, way below what are the expectations. 72.75 the meet record, 81.47 the national record. And Virendra, what surprises me, or which is an advantage for these hammer throwers who are participating here, the meet record 72 plus meters, the national record 81 plus meters, but the Asian youth qualifying mark is only 64.90. बिल्कुल। So इससे ज़्यादा opportunities आपको क्या मिल सकती है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एक अच्छा मौका है इन सभी के पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने का, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव करने का। और अगर आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है वीरेंद्र, आप ये दोनों हाथ से अगर ग्रैब नहीं कर सकते हैं, then you got to blame yourself. You can't blame anyone. The AFI has given such a wonderful platform. Use it. इस तरह के अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते हैं और ऐसे मौके भी बार बार नहीं आते हैं कि यदि हम राष्ट्रीय कीर्तिमान और जो हमारे मीट रिकॉर्ड है उन पर नज़र डालें, उनसे काफ़ी कम डिस्टेंस का क्वालिफाइंग मार्क जहां पर आपको मिले और ऐसा मौका मिले, इस मौके को निश्चित रूप से आपको एनकैश करना चाहिए, भुनाना चाहिए। प्लेटफॉर्म एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया गया है, सुविधाएं आपके पास हैं, लेकिन केवल आपको अपनी मेहनत के माध्यम से इस मौके को भुनाना है। के पश्चात अगले प्रतिभागी 597 यश प्रवीण कुरबेर कर्नाटका के।
रेड फ्लैग अप। रिलीज करने में उनसे थोड़ी सी चूक हुई है और सीधा केज में जाकर टकराया है हैमर। तीसरा राउंड चल रहा है। के पश्चात हैं श्रीनिवास आर, कर्नाटका के। One name, of course, Virendra, while we watch these young boys, one name which always will stand out in the hammer throw on the Indian scene is that huge man, Praveen Kumar. प्रवीण कुमार। Sadly passed away last year, became an actor later on in life, but what close to 7 feet in height, broad shoulders. What an impact he made as far as the hammer throw is concerned. Praveen Kumar Sopti, that was his full name, but was popularly known as Praveen Kumar. अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के। एक अच्छा रोटेशन था, एंगल भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अचीव किया है, लेकिन देखना होगा फासला कितना तय करता है हैमर। फिफ्टी प्लस का थ्रो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें 64.90 मीटर का क्वालिफाइंग मार्क है। Watch that throwing motion. Yes, he seems to be one of the favorites out here. The throwing motion, which starts with the thrower swinging the hammer back and forth and about 2 times to generate the momentum. Shivraj Rajesh Jadhav of Maharashtra was the last of the throwers there. And then, of course, you will watch the thrower making 3, 4, or rarely 5 full rotations using the complex heel toe foot movement, spinning the hammer in a circular path and increasing its angular velocity with each rotation. Watch now the spinning the hammer horizontally, instead spun in a plane that angles up towards the direction in which it will be launched. The red's going up once again. Narpat Singh, Rajasthan, one of the 14 hammer throwers in action here. The second final of the morning session. We're watching the young boy there, Narpat Singh, Rajasthan. Golu Yadav of Uttar Pradesh, the last of the 14 hammer throwers.
The head of the hammer is allowed to touch the ground outside the circle at any time during the throw, but the thrower obviously has to continue to complete the throw. That's the essence of good throwing. All the humanity and position existed to collect the distributed materiality. Primary resistance The speed of release and the angle of the projection, to collect and provided the angle of the projection is approximately 40 degrees, it is not critical. We are now shifting to the girls long jump heptathlon, event number 5. जसकिरण कौर 4.15 for Jaskiran Kaur. The long jump, the 5th of the event in the women's heptathlon, 2 more after this. They are restricted to submit a relay confirmation letter for nuclear release index at the forward before 9 p.m. Finally, restricted. The javelin throw will be the next in the heptathlon, 500 grams, which will be heptathlon event number 6. And then the final will be the 800 meters in the afternoon session. Doing well there. 5.68 for Mubasina Muhammad. The more I watch this girl, the earlier jump, Virendra Mubasina Muhammad, who won the long jump with 5.83, the more I watch her, the more of an impression she makes on us and the viewers. बिल्कुल पहले दिन ही ये लॉन्ग जंप हुआ था और उस आपको मौका मिला था उससे कुछ सवालात करने का और उसके मन की बात जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने का, जिसमें एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर निकल के आई थी कि वह समय समय पर अपनी ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए 8 घंटे से अधिक का सफ़र तय करके जो है मैदान तक पहुँचती थी और बाद में फिर उनके पेरेंट्स ने भी वहाँ पर शिफ्ट किया। तो ये एक रुझान, ये आपका लगाव और ये आपके मन के अंदर जो आपकी भावनाएं हैं कि जिसके माध्यम से आप खेलों की तरफ आकर्षित हुए हो और खेलों को अपना रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। Well, Neeraj, as always, very quick. Moor Mukherjee with 2,998 points in the lead. We're watching Thakur Sapna Ben Parbatji of Gujarat. Mubasina Muhammad in second place, 2,836. Now, can you imagine? She's won the long jump, the lone event, the long jump, and she says, I'm not happy. I still want to compete in the heptathlon and perhaps look at a podium finish.
बिल्कुल, यहाँ पर यदि हम पहले और दूसरे स्थान के बीच में देखें, फासला ज़्यादा नहीं है। और लॉन्ग जंप में वो शायद स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग जंप में जो है जीता था मेडल, गोल्ड मेडल थी, पहले स्थान पर रही थी। तो लॉन्ग जंप उनका इवेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग इवेंट है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहने से और उन्हें ज़्यादा पॉइंट अर्जित होंगे। 5.83 लॉन्ग जंप में अगर करेगी तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 5.83. हाँ, थैंक्स. We'll try and give you the if she does 5.83 again or around 5.83, she doesn't necessarily have to do 5.83, but if she does 5.83, how many points does she get? We'll tell our viewers in a short while from now. That's a good point you made, because right now the difference between her, as of course we have shifted to the hammer throw for the boys from the long jump in the heptathlon, but going back very quickly, the difference is 130 points only. So if she does 5.80 plus, she should slowly slip into second position. Yes, it is 130 points only. लेकिन लॉन्ग जंप उनका स्ट्रॉन्ग इवेंट है. Yeah, that's why I said if she does 5.80 और वो फिगर के आसपास, तो suddenly points ज़्यादा मिलेंगे and possibility of lying in the first. पहले दिन वाला परफॉर्मेंस यहाँ पर अभी हेप्टाथलॉन में, इस कंबाइंड इवेंट में भी वो दोहराती हैं, तो निश्चित रूप से पॉइंट ज़्यादा अर्जित करेंगी, ज़्यादा पॉइंट उन्हें मिलेंगे. और स्थितियाँ जो हैं वह 5 इवेंट के बाद यहाँ पर बदल सकती हैं, लेकिन देखना होगा मोहर मुखर्जी वेब नंबर 3 to 8 के इस लॉन्ग जंप इवेंट के परफॉर्मेंस को भी. फिलहाल हैमर थ्रो आपके स्क्रीन पर. फील्ड पर यह पहली प्रतियोगिता है, आज तीसरे और अंतिम दिन. ट्रैक पर पहली प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है 10,000 मीटर रेस वॉक की, और दूसरी तरफ मैदान में लॉन्ग जंप हेप्टाथलॉन का इवेंट भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है. अगला इवेंट ट्रैक पर होने जा रहा है 800 मीटर, जो कि ठीक 8 बजे होगा, 800 मीटर के फाइनल्स. So if she does 5.83, Neeraj says she gets 798 points. So 798 points might just change the entire complexion of the situation after round 6 and then after round 5. Am I right? After round 5. And that might change number 1 and 2 position. बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो अभी फिलहाल लीड कर रही हैं उनके परफॉर्मेंस पे नज़र डालनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही की परफॉर्मेंस का क्या डिफरेंस रहता है और उन्हें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो अंक मिल रहे हैं, उसमें कितना अंतर है. फिलहाल यदि ये अपना प्रदर्शन पहले दिन वाला यहाँ पर दोहरा दें तो निश्चित रूप से ये पहले स्थान पे पहुँच जाएंगी 5वें इवेंट के बाद. उसके पश्चात 2 इवेंट और शेष रह जाएंगे, जेवलिन और 800 मीटर. स्थितियां यहाँ पर परिवर्तित हो सकती हैं और एक मौका है यहाँ पर मुबासिना के लिए. Very interesting in both the long jump as well as the hammer throw for boys on at the far end of the stadium. The 2 circular movements which you will now watch, with the hammer turning the whole body then through 360 degrees, what we call in athletic terms as the turn. In fact, most athletes, and watch him now, prefer to do with 3 turns. That's 1, 2 and 3. In fact, use the 4th as well, the 4th half. लेकिन हैमर सीधे केज में जाकर टकराया है और रेड फ्लैग अप. So, सब इतनी बात करने के बाद क्या हुआ? लाल फ्लैग ऊपर गया. बिल्कुल वही जो आप कल भी जिक्र कर रहे थे कि आपको कंसंट्रेट करना होगा आपके रोटेशन पर, और रोटेशन के साथ परफेक्ट रिलीज ऑफ द इक्विपमेंट इम्प्लीमेंट ऑन टाइम. हम ट्रैक पर पुनः हाजिर हैं. 800 मीटर
बॉयज अंडर 18 का फाइनल लेकर। और लेन 1 में है नरेश भाई वसानी गुजरात, लेन 2 साहिल उत्तराखंड, लेन 3 पर है हिमांशु राठी उत्तर प्रदेश, लेन 4 में है विशाल पॉल उत्तर प्रदेश, लेन 5 में है राहुल ओरान मध्य प्रदेश, लेन 6 पर है सचिन हरियाणा के, 7 युगांक चौधरी उत्तर प्रदेश, और लेन 8 पर है बिल्लू हरियाणा के। So yes, just how fast in the 800 meters will also depend for these boys on various factors. The endurance, the economical running action, and a certain amount of willpower. Naresh Bhai Vaswani in 1, to the right of your picture frame. There he is, Naresh Bhai Vaswani of Gujarat. In 2 is Sahil of Uttarakhand. In 3 to the left is Himanshu Rathi of Uttar Pradesh. In 4 is Vishal Pal, his compatriot, also from Uttar Pradesh. 5, Rahul Orion of Madhya Pradesh. 6, Sachin Haryana. 7, Yugang Chaudhary, and 8, Billu of Haryana. The highest possible level of endurance for a particular distance, in this case the 800 meters, the largest contribution to the performance as they now move in, the advantage slipping away. We're now at the back straight, past the 200. Sahil, Vishal Pal, Yugang Chaudhary, Himanshu Rathi, that slender lead. From the insides, trying to slip in there, is Billu of Haryana. Rahul Orion seems to be in a fair bit of hurry. The pack still continues to remain the same. Himanshu Rathi, he's got everything. The final 400 meters perhaps will decide whether Himanshu Rathi has that endurance, Virender, that we're talking about. He's built up a sizable lead, 7 or 8 meters. The others will obviously try to get the momentum, but he definitely looks to have the endurance. बिल्कुल, देखिए उनकी पेस की और देखिए उनके स्टेप्स, जो कदम उनके जो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं फिनिश लाइन की ओर। दूर दूर तक उनके आसपास कोई नहीं है। 10 मीटर से ज़्यादा की लीड उन्होंने यहाँ पर ले ली है और क्लियर जीत दर्ज की है हिमांशु राठी उत्तर प्रदेश के, और उनके पीछे रहे हैं युगांक चौधरी उत्तर प्रदेश के। वंडरफुल। पहला और दूसरा स्थान दोनों ही उत्तर प्रदेश ने दर्ज की है, जीत दर्ज की है यहाँ पर पहले और दूसरे स्थान पर। Wonderful start for him. Took the lead, continued to maintain that lead, and then never allowed that lead to slip away to take the first position. Has he achieved 154.55? That's the big question. बिल्कुल आपने सही कहा। क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर रखा हुआ है 1 मिनट 54.55 सेकंड का, और देखना होगा कि क्या समय दिया है हिमांशु राठी ने। Various athletes, as we all know, have different strategies. Some of them don't prefer to take the early lead, stay in second or third, watch the pace of the leader,
and then try to slip in and take advantage to move into the first position after 400. But Himanshu Rathi had different ideas from the very beginning. He took that lead and continued to keep that lead to win this event. शुरू से ही जैसे ही 800 मीटर प्रारंभ हुई है वहीं से उनके मंसूबे यहाँ पर नजर आ गए थे और देखिए नतीजे हमारे सामने हैं। 1 मिनट 53.61 सेकंड्स पे पहले स्थान पर रहे हैं हिमांशु, दूसरे स्थान पर रहे हैं युगांक उत्तर प्रदेश के 1 मिनट 55.87 सेकंड के साथ, और तीसरे स्थान पर रहे हैं राहुल ओरान मध्य प्रदेश के 1 मिनट 56.56 सेकंड के साथ। यदि हम देखें यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क 1 मिनट 54.55 सेकंड्स का था और हिमांशु राठी ने उन्हें यहाँ पर जो है अचीव कर लिया है उन्होंने, और एक अच्छा प्रदर्शन। और दूसरे ट्रैक इवेंट में भी एक एथलीट जो है वे क्वालिफाइंग मार्क के नज़दीक पहुँचे हैं। Shifting back to the hammer throw for boys. 5th राउंड इज इन प्रोग्रेस इन हैमर थ्रो। 5वां राउंड यहाँ पर चल रहा है और फिलहाल 739 अब्दुल रहमान जो कि उत्तर प्रदेश के हैं 59.02 मीटर का पहला थ्रो रहा है, दूसरा उन्होंने फाउल किया है, तीसरा 57.74 का रहा है, चौथा फिर फाउल किया है और ये 5वां अटेम्प्ट उनका। Yes, some of the basic principles that you need to watch these hammer throwers, even if they're young boys, the principle is the same. 58.60 for Abdul Rahman. Not been able to achieve what he did in the first round, 59.02. Golu Yadav with a few crosses against his name. He's had only one clean throw of 56.67. All the others have been the crosses or the X's. और ये वाला अटेम्प्ट भी उनका जो है फाउल रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए रोटेशन के टाइम पे और सीधे बाहर सर्कल के निकल गए। अगले कॉम्पिटिटर कार्तिक जिनका बेस्ट थ्रो रहा है 62.45 मीटर्स का, but none of them are anywhere close to the national mark of 81.47. Nitesh Punia. The name Punia seems to be dominating the throws. Krishna Punia, सीमांतिल पुनिया, Semantil Punia. नाम ही यहाँ पर हमारे को जो है वो हरियाणा की तरफ, उत्तर भारत की तरफ ले जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा पहले भी कि थ्रोज के अंदर वर्चस्व रहा है उत्तर भारत के लोगों का, और ट्रैक पर यदि हम नज़र मारें मिडल शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस की तरफ, वहाँ पर साउथ जो है वो डोमिनेट करता रहा है। एक बार फिर कार्तिक का ये प्रयास, परंतु यहाँ पर ये फिर अपना संतुलन खो बैठे और रोटेशन के टाइम ही वे अपना संतुलन जो है उसको संभाल नहीं पाए और सीधे सर्कल के बाहर, और 5वां प्रयास उनका यहाँ पर बेकार गया। फिलहाल 62.45 मीटर का जो उनका पहला और इकलौता यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है, वही उसी से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। अंतिम अवसर रहेगा 6th राउंड में। फिलहाल नरपत सिंह 683 66.622 मीटर्स उन्होंने थ्रो किया है। एक ही अटेम्प्ट में उन्होंने यह मार्क अचीव किया है, उसके पश्चात 3 थ्रो लगातार उनके फाउल हुए हैं। नरपत सिंह राजस्थान के। So when you talk of the hammer throw, you talk of the preliminary swings, then you talk of the turns, either 2 or 3, then the hold. For these young boys, the basics is what they have learnt at the various centers that they train. Watch the first turn, which becomes critical. The stance is so important. Then the delivery.
the transition, of course, and after all the hard work that you do, what do you get? A red flag. बिल्कुल। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, और जब कंपटीशन की बारी आती है और कंपटीशन के टाइम पर केवल आप अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी इधर उधर जो है, एकाग्रता आपकी थोड़ी भी इधर उधर होती है, और उस समय यदि आपको रेड फ्लैग उसके कारण देखना पड़ जाए, तो निश्चित रूप से आपके मनोबल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर हम ट्रैक की ओर अग्रसर हैं, जहाँ पर 800 मीटर गर्ल्स अंडर 18 के फाइनल आयोजित होने जा रहे हैं। 800 मीटर गर्ल्स अंडर 18 लेन 1 में है 304 मानसा चौहान उत्तर प्रदेश की। लेन 2 में है 175 श्री रक्षा कर्नाटका। लेन 3 में है हिना जो कि हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेन 4 में पुनः हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं गीतिका दाहिया, और लेन 5 में है अंशलिन एम जो कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेन 6 में है रूपिका पी पेरियासामी तमिलनाडु से। लेन 7 में है छोटी देवी जो कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और लेन 8 में है प्रियंका कर्नाटका की। यदि हम नज़र डालें यहाँ पर मिलिंद वागले सर, 3 एथलीट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हरियाणा के 800 मीटर के फाइनल में, और कर्नाटका के 2 एथलीट हैं, तमिलनाडु के 2 हैं, और उत्तर प्रदेश का 1 है। Yes, so just as we have been talking since yesterday, that Haryana seems to be producing good track runners as well. The major consideration, of course, in the 800 meters after the boys went through just earlier on is not going to be the technique, but the conditioning of the body, which will be to perform at peak. This is where the advantage will now slip away as they all come together, all 8 of them. This, of course, will require some understanding for all of you there to watch how the energy systems of the human body function. These are some of the parameters in modern sports science which have really been implemented over the years. 2 early leaders to start off with. They're there on the far side as they come now towards the 100. Moving on, the leader has a nice little style there, Hina of Haryana. She's got Rupika Periswamy of Tamil Nadu chasing her, but that has changed right now. Rupika Periswamy, Hina. Will this stay the way that they started off with? 3 of them now. There are number 4 and 5 onto the back straight. Is the lead going to change? बिल्कुल देखना होगा कि यहाँ पर कोई परिवर्तन, यहाँ पर मौका मिलता है क्या किसी को। फिलहाल हिना हरियाणा की आगे चल रही हैं, लेकिन ये आखिरी कर्व, आखिरी बैंड की तरफ बढ़ते हुए परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। It has kept on changing except for Hina 141 who has continued to be in the lead. Anslin of Tamil Nadu has taken over. We got someone else now chipping in. Geetika Daya of Haryana. Being pushed there is Hina. She's got the strength there to stay on. Haryana with Geetika Daya taking the second. But a wonderful race there for Hina, who took the early lead, Virender, and continued to hold that lead till the very end. देखना होगा समय की तरफ, टाइमिंग की तरफ, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर रखा हुआ है 2 मिनट 15.73 सेकंड्स का। क्या इस समय को यहाँ पर वो अचीव कर पाती हैं, क्या इस टाइमिंग को वो अचीव कर पाती हैं? एक बार पुनः देखिए रिप्ले के अंदर किस तरह से
अपने आप को बरकरार रखा है, उन्होंने लीड कर कर चली हैं शुरू से। कुछ एथलीट्स को इस तरह का उनका ये प्रयास रहता है, उनको इस तरह की एक आदत रहती है, या ये कह सकते हैं कि वो चाहते ही हैं कि मैं रेस को लीड करके चलूं। और कुछ एथलीट्स होते हैं कि जो लीडर को फॉलो करके चलते हैं और अंतिम अवसर का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है तो वह उसे बीट कर आगे निकल जाते हैं। परंतु यहाँ पर आप देखें, हिना के द्वारा कोई मौका नहीं दिया गया और सीधे जीत दर्ज की है। I think she came with a very clear plan. Start with the lead, hold on to the lead, and finish with the lead. बिल्कुल, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी यहाँ पर स्पष्ट प्रदर्शित होता है। यदि आप में कॉन्फिडेंस है तभी आप लीड करके चलोगे। But what I liked about is the number 2 girl, Gitika Daya, 2 minutes 16.81. Unfortunate not to achieve the qualifying mark of 2:15.73. Gitika Daya 2:17.35. And Anslin Tamil Nadu 2:18.16. So the qualifying mark of 2:15.73. Early morning, the temperatures are not very high. It's nice and on the pleasant side. But in spite of that, the two of them have not been able to breach the qualifying mark of 2:15.73. We shift now back to the hammer throw. So Abdul Rahman, 59.02, just about trying to get back to that mark. 58.60. On the 5th, we are now coming towards the closing stages of the hammer, where we started off with 14 of the young boys down to the 8. फिलहाल 6th राउंड, आखिरी राउंड चल रहा है हैमर थ्रो में। लेकिन यहाँ यदि हम परफॉर्मेंसेस की तरफ ध्यान दें, परफॉर्मेंस हमारे मीट रिकॉर्ड और नेशनल रिकॉर्ड के अलावा यदि हम देखें, 81.47 मीटर का जो है नेशनल रिकॉर्ड है और 72.75 मीटर का मीट रिकॉर्ड है। क्वालिफाइंग मार्क 64.90 का है, लेकिन इस 64.90 के नज़दीक भी यहाँ पर कोई अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। देखना होगा, फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा। 6 राउंड यहाँ पर चल रहा है, अंतिम अवसर है शेष बचे हुए इन खिलाड़ियों के लिए, इन थ्रोअर्स के लिए। फिलहाल गोलू यादव सर्कल में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कार्तिक उत्तर प्रदेश के 62.45 मीटर का उनका बेस्ट थ्रो रहा है फिलहाल 5 राउंड में। रोटेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन रिलीज जो है वो प्रॉपर परफेक्ट टाइम पर शायद वो नहीं कर पाए हैं, और फासला सही दिशा की ओर तो गया है उनका ये हैमर, परंतु फासला सही नहीं तय कर पाया है। देखना होगा क्या वह 62.45 के अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के अभी तक में सुधार करते हैं। इसके पश्चात 680 नरपत सिंह राजस्थान के। नरपत सिंह का परफॉर्मेंस यदि देखें, आज हैमर थ्रो के अंदर पहला ही प्रयास उनका 66.22 मीटर्स का रहा है। उसके पश्चात 4 अटेम्प्ट उनके लगातार फाउल हुए हैं, और ये आखिरी अटेम्प्ट था
आखिरी मौका था उनके पास, यहाँ पर भी उन्हें रेड फ्लैग मिला है और केवल एक अटेम्प्ट उनका जो है 66.22 मीटर्स का रहा, बाकी 5 फाउल उन्होंने किए हैं। इसी से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। और इसी के साथ हैमर थ्रो प्रतियोगिता का यहाँ पर समापन, और जजेस जो हैं रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे हैं और बहुत जल्द नतीजे हम तक पहुंचाएंगे। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी ये की ऑफिशियल्स, डॉक्टर राय जॉन टेक्निकल डेलीगेट वहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही टेक्निकल मैनेजर श्री सोमशेखर। और एक बार फिर रुख कर रहे हैं लॉन्ग जंप हेप्टाथलॉन की इस 5th इवेंट की ओर, 5वां इवेंट। और वीरेंद्र, शायद इसके बाद हमारी जो नज़र जाएगी वो 207 जो मुबस्सिना मोहम्मद और 328 मोहर मुखर्जी के ऊपर, क्योंकि ये दो 1 और 2 स्थान पे है लॉन्ग जंप पहुंचने तक। बिल्कुल, ये 5वां इवेंट है और फिलहाल भुवाना सारियापी कर्नाटका की वेब नंबर 187। निश्चित रूप से हमारी नज़र जो है वो मुबासिना मोहम्मद की तरफ भी रहेगी, जो कि फ़िलहाल दूसरे स्थान पर चल रही हैं 4 इवेंट की समाप्ति के पश्चात, और पहले स्थान पर है मोहर मुखर्जी वेस्ट बंगाल की। लक्षद्वीप के एथलीट जो हैं वे अब जो है बोर्ड पर दिखने शुरू हो गए हैं। इसकी वजह केवल एक ही है कि जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन सारे एथलीट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, सुविधाएं भी यहाँ पर आपको मिल रही हैं, परंतु खिलाड़ियों को केवल यही प्रयास करना है कि इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग करें और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मापदंड है, जो एक टारगेट आप लेके चलते हो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना है, उसको अचीव करें। So, the point again to add to what you said is that the AFI can give you a platform. आपके सामने एक थाली रखी जा सकती है जिसमें अच्छा खाना है, आप वो खाना खाना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो the AFI has given you a platform. It's important that you take advantage of that platform. बिल्कुल सही कहा आपने, And that थाली is- आपके सामने परोसी हुई है। And that is why I compliment this girl from Lakshadweep. I may sound as if I'm repeatedly talking about her, but remember, as you mentioned, 8 hours to travel to train, shifting from Minicoy to Kavarati, infrastructure not very high, unlike the big cities. And in spite of that, she has come there with a particular mission. And the mission is to win. और वो उस मिशन में कामयाब भी अभी तक हैं, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ रहेंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अंडर 18 में वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। काफ़ी समय है उनके पास आगे बढ़ने का, और जो लग्न और जो मेहनत और जो समर्पण की भावना लेकर वो एथलेटिक्स के साथ जुड़ी हैं, खेलों के साथ जुड़ी हैं, इसी को वो लगातार आगे कंटिन्यू करें, जारी रखें। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका भविष्य खेलों में उज्जवल रहेगा। At 8:30, we will have the semi-finals of the 200 meters for boys. In the sky. We are a nation of champions. All of them have one dream that shines and soars their spirit. But what's a dream that has no obstacles? Hurdles that you need to push through and test your determination.
And it takes something really special to turn these obstacles into opportunity. The opportunity to take what you deserve. The opportunity to not just wake, but to rise. To race the sun to the finish line of glory. To leave behind the defeats and emerge as the champion you were meant to be. We are honored to be the official banking partner of the Athletics Federation of India. Together, we aim to open up a world of opportunity for our women athletes in their quest to make India proud and get India geared for gold. India loves to play, and play it will. India loves to play in those nooks, in the fields, the hallways, on the courts, even in the sky. We are a nation of champions. All of them have one dream that shines and soars their spirit. But what's a dream that has no obstacles, hurdles that you need to push through and test your determination? And it takes something really special to turn these obstacles into opportunity. The opportunity to take what you deserve. The opportunity to not just wake, but to rise. To race the sun to the finish line of glory. To leave behind the defeats and emerge as the champion you were meant to be. We are honored to be the official banking partner of the Athletics Federation of India. Together, we aim to open up a world of opportunity for our women athletes in their quest to make India proud and get India geared for gold. India loves to play, and play it will. India loves to play in those nooks, in the fields, the hallways, on the courts, even in the sky. We are a nation of champions. All of them have one dream that shines and soars their spirit. But what's a dream that has no obstacles, hurdles that you need to push through and test your determination? And it takes something really special to turn these obstacles into opportunity. The opportunity to take what you deserve. The opportunity to not just wake, but to rise. To race the sun to the finish line of glory. To leave behind the defeats and emerge as the champion you were meant to be. We are honored to be the official banking partner of the Athletics Federation of India. Together, we aim to open up a world of opportunity for our women athletes in their quest to make India proud and get India geared for gold. India loves to play, and play it will. India loves to play in those nooks.
So the first of the three semi-finals in the boys 200 meters at the far end. Lakshit Panwar of Delhi in 1, Durvesh Pawar of Maharashtra in 2, Ajay Haryana in 3, Basha Odisha 4, Pawan Kumar Andhra Pradesh 5, Lav Rawat as they set off, Raghavendra Dhruva Balal, the first of the three semi-finals, onto the bend there, will now come into the home straight. It looks as if it's lane number 5 and 6 at this point of time in the inside, and right in the middle in lane number 4, Mohammad Basha. He's done well over the last 2 days that we've seen him out here. 658 Mohammad Rayan Basha of Odisha, in the lineage of boys and girls from Odisha. He had a good start there on the bend. He picked it up, made sure that the consistency was kept, and this is the spot where he decided that the lead that he had mustered up is what he will continue to keep, finishing off towards the end a little relaxed. So 22.33 for Mohammad Basha, Pawan Kumar 22.76, Lav Rawat 22.77. Remember, this is the semi-final, so obviously they'll get in their better best later on for the finals. Coming up is Heat 2 of the 200 meters, Virender. पहली हीट यहाँ पर आयोजित हो चुकी है। कुल 3 हीट आयोजित होंगी 200 मीटर बॉयज अंडर 18 के इस सेमीफाइनल में, और दूसरी हीट में फिर यहाँ पर हमारे सामने 8 पार्टिसिपेंट्स महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात। यदि हम इस हीट की तरफ नज़र मारें तो लगभग हर स्टेट के प्रतियोगी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेन 1 में हैं सोहम परशुराम मोकुल महाराष्ट्र के, लेन 2 में है पात्री साई कुमार आंध्र प्रदेश, 3 अभय सिंह मध्य प्रदेश, 4 मुथन्ना के वाई कर्नाटका, 5 गजेंद्र सिंह राजस्थान, 6 शेख अजरुद्दीन तेलंगाना, 7 यश तोमर उत्तर प्रदेश, और लेन 8 ऋषिराज सिंह गोहिल गुजरात। ये आपके सामने लेन 1 पर नजर आ रहे हैं लक्षित पवार, जो कि दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेन 2 में है दुर्वेश दीपक पवार महाराष्ट्र, मथन्ना के वाई कर्नाटका के, उसके पश्चात गजेंद्र सिंह राजस्थान, शेख अजरुद्दीन तेलंगाना, यश तोमर उत्तर प्रदेश, और ऋषिराज सिंह गोहिल गुजरात। दूसरी हीट सेमीफाइनल 200 मीटर बॉयज। नेशनल रिकॉर्ड आमिया कुमार मलिक के नाम से है 21.33 सेकंड्स का, और मीट रिकॉर्ड है शनमुगा श्रीनिवास के नाम से 21.87 सेकंड्स का। और ये एक अच्छी शुरुआत और सीधे स्टेट की ओर अग्रसर। और यहाँ पर नज़र आ रहा है लेन 3 से 6 to 2 अभय सिंह मध्य प्रदेश के, काफ़ी अच्छी लीड के साथ उन्होंने यहाँ पर फिनिश किया है इस सेकंड हीट में पहले स्थान पर।
देखिए एक अच्छी शुरुआत रही है और शुरू से ही उनके मंसूबे यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे थे। शुरू से ही बढ़त लेकर चले हैं लेन नंबर 3 से अभय सिंह मध्य प्रदेश के, और एक अच्छी हीट, पहली हीट के मुकाबले थोड़ी फास्ट हीट नज़र आई है यहाँ पर। अभय सिंह मध्य प्रदेश 22.17 सेकंड्स के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। मुथन्ना कर्नाटका के 22.66 सेकंड्स के साथ, और तीसरे स्थान पर रहे हैं शेख अजरुद्दीन तेलंगाना के 22.69 सेकंड्स के साथ। टाइमिंग की तरफ यदि यहाँ ध्यान दें, क्वालिफाइंग मार्क 21.65 सेकंड का है, और दोनों ही हीट में जो है इसके नज़दीक कोई नज़र नहीं आया। देखिए फ़ोटो फिनिश का ये एक इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। ये फ़ोटो फिनिश कैमरा की इमेज है। देखो जाके आना है ब्रेकफास्ट। So heat 3 of the 200 meters for boys. Chinmay in 1, Pratik in 2, Shivam in 3, Lalit Bhatti in 4, Sangineni Harsha in 5, Madhav Navneet in 6, Vikas in 7, and Ranjit in 8. Now there is trouble for lane number 5, and he is the favorite, or he was the favorite, Sangineni Harshavardhan. It will be a pity. Right now he's still there. Yes, there he goes. That's a huge loss for himself and for his state, Telangana. He was surely the favorite to win this heat, and perhaps he was also one of the star athletes over the last 3 days, but he's got to call it off and get to the side. So 7 to start now with lane 5, Sangineni Harshavardhan. And normally when you have a false start, everything is not well for the others who are there. They have butterflies in their stomach. And there comes the green. So the lineup there, in 1 is Chinmay Nag of Odisha. In lane 2 is Pratik D of Karnataka. In lane 3 is Shivam Uttar Pradesh. In lane 4, Lalit Bhatti of Delhi. In 5, Sangineni Telangana has been out. 6 is Madhav, Maharashtra. 7 is Vikas, Haryana. And 8 is Ranjit Sikarwar of Madhya Pradesh. 200 meters, heat 3, the semi-finals. This time clean off their blocks. Nice little start there for
Lalit Bhatti in 4. In 3, Shivam going well. In the outside, Madhav Navneet of Maharashtra. This is close now, but in lane 3, Shivam Uttar Pradesh, I suspect, took it away. A start after that hiccup where Sangineni Harshavardhan got the red. It's here that Shivam starts taking the lead, starts opening the lead, then onto the home straight. He's got no one pushing him, and that allowed him to win 22.50. Not a great timing. Lalit Bhatti 22.77 and Vikas 22.98. So this is an event which is of significant importance for the two girls, Mohak Mukherjee and Mubasina Mohammed, lying in 1 and 2 positions with a difference of just 31 points between the two of them. 10,000 Mohak Mukherjee after the long jump, 3,621 points. Mubasina Mohammed, 3,589. Just 31 points separating these two going into the javelin, and then of course we will have the decider, which is the 800 meters.
Taral Sumitra Ben Jorabai of Gujarat. And coming up there, The medal is also 10,000 meters for 800 meters, 700. Finally, report for medal ceremony. so there you are, this girl who is the leader of the board with 3,621. Not too much of a run for her. This event would decide which of the two girls pushes themselves forward. Thakur Sapnaben Parbatji of Gujarat. For Maur Mukherjee, 23.26. Eyes will of course also be on 207 Mubasina Mohammed, 3,589 after the long jump. She had 5.68 meters. Was she to get 5.83? Who knows? She might have taken the lead. We're watching a great tussle here between these two girls in the heptathlon, which will decide between the two who is the all-round girl. Bhuvana Saria of Karnataka. It's quite a sight to watch the coaches from the netting behind in the stands giving their last minute advice to these athletes. These are young girls under 18. Lot to learn from here on. An opportunity that we keep on talking about that they've got. Sakshi Bhaskar Tatkar of Maharashtra. The javelin throw in the women's heptathlon. Some of the deficiencies of each of the 7 events needs to be obviously ironed out over a period of time.
Harshita Goswami, Delhi. Making sure that she does not step out of the limits where she is not entitled to be. .8985 for Harshita Goswami. Alfaz Kaur Grewal, Punjab. In fact, when you talk of the javelin, mechanically speaking, the success in this event, similar to all the other throwing events, depends largely on the speed the spear-like implement leaves the hand. Jaskaran Kaur, Uttarakhand. The best throwing angle, as you would watch in the javelin, would always be around 30 to 35 degrees, depending on the wind and the type of the javelin that's used. Here is Mubasina Mohammed, one of the two leaders of the board in the heptathlon after the long jump. She's happy that the white has gone up. .33.81, so she's done well to garner those important points. Her competitor, Mohar Mukherjee, 328, representing West Bengal. So you got the two girls, this girl from West Bengal and the last one from Lakshadweep. .1945. So Mubasina Mohammed, the advantage of that last throw of 33.81. Bhuna Saria, Karnataka. A great deal of javelin throwing. The technique is concerned with the flight problems that you're watching there. The correct angle of release, which allows the javelin to climb gradually to the highest point, and the implement, of course, has to travel without the vibration and not fly with the front end up, as this would create considerable amount of air resistance.
Sakshi Bhaskar Tatkar of Maharashtra. It's good to see that these girls are not fouling their throws. Yashashvi Dubey, Uttar Pradesh. Ladies and gentlemen, pause and wait. Now we are having the medal ceremony. 10,000 rupees worth and more. The guest of honor is the Hari Puri, Vice President, Rupi District Association, and is accompanied by Mr. Service, Representative, Rupi District Association. We should be now approaching the finish of the heptathlon javelin. Which would be the sixth of the events. The winner of the bronze medal The day will come to an end with the 800 meters for the girls in the heptathlon. The winner of the silver medal, Himanshu Kumar, representing Uttarakhand. Performance currently Alpha Score Grewal, Punjab. and the winner of the bronze medal, Ravindra Singh, representing Uttarakhand. Performance 43 minutes 34.25 seconds. Like some of the other throwing events, it is important in the javelin also to follow the strict safety rules. The javelin, of course, has two sharp ends, and therefore some additional precautions are always taken, making sure that nobody stands close to the thrower when the implement is pulled back prior to delivery. Jaskiran Kaur, Uttarakhand. Heena from Haryana and Ansani from Tamil Nadu. Kindly repeat the mic part. Heena from Haryana and Ansani from Tamil Nadu. The deciding factor in the javelin is the speed of the release. Himanshu Rathi Obtain the best possible release speed. and Rahul around The speed accumulated in the run-up, an efficient throwing position, and a lightning, fast throwing action. Will she better what she did earlier on, 33.18? Mubasina Muhammad of Lakshadweep. Oh, she's got the red. But 33.18 is what she got in the earlier round of the javelin. The leader of the pack, Mohar Mukherjee. from Haryana and Ansani from Tamil Nadu. This surely is not her favorite event. And that might allow Mubasina to just slip past her to get into the final round, the 800 meters.
Tina from Haryana, the gold medalist in 800 meters among women. Kindly be put in the mic call. Bhuwana Sarya, Karnataka. For Janice Tresaregi, 19.22. She's lying in the third position after the long jump in the heptathlon overall. Medal winners, kindly report in the mic call. फोर हंड्रेड हर्डल्स के बाद जाता हूँ मेंस के.
India loves to play in those nooks, in the fields, the hallways, on the courts, even in the sky. We are a nation of champions. All of them have one dream that shines and soars their spirit. But what's a dream that has no obstacles, hurdles that you need to push through and test your determination? And it takes something really special to turn these obstacles into opportunity. The opportunity to take what you deserve. The opportunity to not just wake, but to rise. To race the sun to the finish line of glory. To leave behind the defeats and emerge as the champion you were meant to be. We are honored to be the official banking partner of the Athletics Federation of India. Together, we aim to open up a world of opportunity for our women athletes in their quest to make India proud and get India geared for gold. India loves to play, and play it will. In 800 meters among women, the winner of the gold medal, Ansari M representing Tamil Nadu. Performance 2 minutes 18.16 seconds. The winner of the silver medal, Geetika Dahiya representing Haryana. Performance 2 minutes 17.35 seconds. And the winner of the gold medal, representing Haryana, Hina. Performance 2 minutes 16.81 seconds. Congratulations winners. Thank you, sir. नहीं आप भी आओ ना फिर कोई नहीं ये शूट नहीं करेंगे ये नहीं शूट होएगा ये शूट नहीं होएगा वही होएगा मेडल वाला आप भी आ जाओ बीच में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है बीच में आ जाओ बीच में खड़े हो ये तो आएंगे पीछे जाते हैं
We are now coming up to the final of the 400 meters hurdles. Representing Uttarakhand. The qualifying mark that they'll be looking at is 53.234. Madhya Pradesh. Anurag 756 representing Uttarakhand. Number 1. Raghavendra, Madhya Pradesh. Vishnu Shri from Tamil Nadu. Representing Odisha, Bapi Hansda. Bappi Hansda, Odisha in 4. 5, 7, 6. Amit Daya of Haryana in 5. And in lane 6, it is Jerome Sanjay Nishant from Tamil Nadu. 7, Salab Kumar. Lane 7, 6. Salab Kumar from Uttarakhand. And in 8, it is Irfan Muhammad from Kerala. FCC meter code. So yes, the important aspect of the 400 meters hurdles National record. with the national record 50.81 at Singapore. Durgesh Kumar Pal, who also holds the meet record, set in Ranchi 51.49. A reminder that the qualification mark for Tashkent is 53.34. Watch out for the running between the hurdles, which will require a great amount of speed. The balance will have to be very good, and above all, excellent concentration. Anurag in 1, Raghavendra in 2, Vishnu Shri in 3, Bappi Hansda in 4, Amit Daya 5, Jerome Sanjay 6, Salab Kumar 7, Irfan Muhammad 8. And each of the cycles in the 400 hurdles contains 3 strides and begins with the task of changing back to the normal running action. The far end now onto the back straight very quickly. Cleared the first of them. The first stride after the clearance, of course. Achieving the trail leg, moved forward fast and high to land in the direction. Very surely and quickly they'll now come to the final 100 meters. Jerome Sanjay Nishant of Tamil Nadu. He is the first to vault there. Bappi Hansda. Well, look at that lead. Look at that lead there. Bappi Hansda, with Vishnu Shri taking the second. But certainly for this boy from Odisha, Bappi Hansda, virtually Virender about 7 or 8 meters separating 1 and 2. बिल्कुल शुरू में जो आपने देखा स्टार्टिंग में स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ और 300 मीटर तक जो है वह लेन 7 के सलब कुमार और जेरोम संजय निशांत आगे नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही होम स्टेट में उन्होंने एंटर किया एथलीट्स ने और वहाँ पर 655 बप्पी हंसदा ओडिशा के, जिन्होंने काफ़ी अच्छी लीड के साथ यहाँ पर सीधे फिनिश लाइन को क्रॉस किया। जैसा कि अभी आपको मिलिंद वागले जी बता रहे थे कि हर्डल्स के बीच में जो आपका बैलेंस है और स्पीड है दोनों को आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पर रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने बप्पी हांसदा जो कि 51.95 सेकंड्स के साथ यहाँ पर जो है पहले स्थान पर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने जो एशियन यूथ के लिए एक क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था 53.34 उसको अचीव कर लिया है। और दूसरे स्थान पर रहे हैं विष्णु श्री तमिलनाडु के 54.05 सेकंड्स के साथ और तीसरे स्थान पर रहे हैं जेरोम संजय निशांत जो कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 54.93 सेकंड्स के साथ। एक अच्छा टाइमिंग और ये देखिए फोटो फिनिश कैमरा की ये इमेज किस तरह से फोटो फिनिश के माध्यम से इनके जो डिसीजंस हैं, इनके जो टाइमिंग्स हैं वे आप तक पहुंचाए जाते हैं और रिजल्ट्स बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग कहते हैं ESR
कि ये सारे हमारी टीम इसके पश्चात 400 मीटर हर्डल्स गर्ल्स अंडर 18 का फाइनल आयोजित होगा 9:40 पर। वीडियो लगा दो। Delhi. और एक बार फिर फील्ड की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर जेवलिन थ्रो गर्ल्स अंडर 18 का फाइनल आयोजित किया जा रहा है। कॉम्पिटिटर्स हैं दिशा दिल्ली की, मनीषा हरियाणा की, रुचि हरियाणा और उसके पश्चात नवप्रीत कौर पंजाब, दिशा नलवाड़े कर्नाटका, मुस्कान पटेल उत्तर प्रदेश से, 280 राजलक्ष्मी आर तमिलनाडु की, 329 अनुप्रिया रॉय वेस्ट बंगाल। अनुप्रिया रॉय वेस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उसके पश्चात हैं निवेथा वी तमिलनाडु की। 51.84 meters set by Deepika and the national record 55.19 meters set by Deepika. ಅದೇ ಲೈನ್ जेवलिन थ्रो गर्ल्स अंडर 18 का जो फाइनल इवेंट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तीसरा और अंतिम दिन 18th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 और ये महात्मा गांधी स्टेडियम अजराकाडू उडुपी का ये एथलेटिक एरेना, खूबसूरत वादियों का ये शहर है उडुपी। और फिलहाल 104 दिशा जो कि दिल्ली से हैं,
पहला राउंड यहां शुरू होने जा रहा है जेवलिन थ्रो का। क्वालिफाइंग मार्क जो यहां इन एथलीट्स के लिए निर्धारित किया गया है एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए 48.61 मीटर्स का है। और यदि हम राष्ट्रीय कीर्तिमान की बात करें, नेशनल रिकॉर्ड की बात करें, तो नेशनल रिकॉर्ड और मीट रिकॉर्ड दोनों ही दीपिका के नाम से दर्ज हैं। नेशनल रिकॉर्ड 55.19 मीटर्स के साथ और मीट रिकॉर्ड 51.84 मीटर्स के साथ। कुल 9 प्रतियोगी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं जेवलिन थ्रो के इस फाइनल इवेंट में। रुचि जो कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पहला राउंड, पहला थ्रो, अपने थ्रो से संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। और इसके पश्चात 231 वर्षा जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जेवलिन थ्रो जहां आपकी भुजाओं में जो है दम होना चाहिए, वहीं साथ में जब आप थ्रो करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस मूवमेंट और उस स्पीड का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और पुनः यहाँ पर भी वही चीज़ वापस सामने आती है कि सही एंगल पर सही दिशा यदि आपने दे दी अपने इम्प्लीमेंट को, अपने जेवलिन को प्रॉपर फोर्स के साथ, तो निश्चित रूप से एक अच्छी दूरी तय करेगा जेवलिन। और फिलहाल नवरीत कौर पंजाब की बिब नंबर 239। दिशा नेलवाड़े तैयार हैं कर्नाटका की। एक अच्छी गति के साथ, एक अच्छे फोर्स के साथ उन्होंने ये प्रयास किया है, लेकिन वाइट फ्लैग अप हुआ है, लेकिन दूसरे एंड से जो है इशारा हुआ है कि मेजर नहीं कर सकते हैं। फाउल थ्रो 185 दिशा नेलवाड़े का। मुस्कान पटेल उत्तर प्रदेश की। मुस्कान पटेल 309 उत्तर प्रदेश। देखना होगा उनका परफॉर्मेंस। पहला राउंड यहां पर आयोजित किया जा रहा है जेवलिन थ्रो गर्ल्स अंडर 18 का।
34.03 मीटर्स का ये थ्रो रहा है। और इसके पश्चात हैं 280 राज्यलक्ष्मी आर, तमिलनाडु की। टू 290 निवेथा वी, तमिलनाडु की ये एथलीट। दीपिका के नाम से 55.19 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड है और मीट रिकॉर्ड है 51.84 का। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क की तरफ हम यदि ध्यान दें तो 48.61 मीटर यहाँ फिर एक बार जो है मौका है इन सभी एथलीट्स के लिए कि क्वालिफाइंग मार्क मात्र 48.61 मीटर का है। इस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करें और इसे अचीव करें। दूसरा राउंड यहाँ शुरू हो चुका है जेवलिन थ्रो का। दिशा 104 दिल्ली की। रेड फ्लैग यहाँ स्पष्ट दर्शा रहा है कि ये फाउल थ्रो है। इसके पश्चात आ रही हैं रुचि हरियाणा से। वन 154 रुचि जेवलिन थ्रो इवेंट जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रांति लाई है नीरज चोपड़ा के माध्यम से। और जेवलिन थ्रो के अंदर यदि देखा जाए आपका जो ग्रिप है इक्विपमेंट पर, इम्प्लीमेंट पर, वो प्रॉपर जगह से सही तरीके से ग्रिप किया हुआ हो और आपके हेड के नज़दीक से एक अपने स्प्रिंट को मेंटेन करते हुए पर्टिकुलर एंगल पे यदि आप उसको रिलीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा फासला तय कर सकता है। परंतु फिर आवश्यकता आपकी भुजाओं में, आपके आर्म्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ की और साथ ही साथ स्पीड की। टिप नंबर 231 वर्षा पंजाब की। पहला प्रयास रहा था 42.01 मीटर्स का। दूसरा राउंड यहाँ पर चल रहा है। Now we have 39.32 मीटर्स का सेकंड अटेम्प्ट रहा है वर्षा का। पहला परफॉर्मेंस 42.01 मीटर्स का था। लगभग 3 मीटर से उनका 2.5 मीटर के आसपास ये थ्रो कम गया है। 106.
48.61 मीटर लैंडमार्क है एशियन यूथ के लिए क्वालिफाई का, और 42 मीटर और 48 मीटर में फासला तो यहाँ नजर आ रहा है, परंतु अभी फिलहाल दूसरा राउंड है, 4 राउंड इसके बाद और होंगे। नवप्रीत कौर 239 पंजाब से, Lane 7, 252, Poonam Gelon, Rajasthan. And lane 8, 119, Radhabin, Herbert by Gujarat. HSC meter code, 1 minute, 01.81 seconds, set by Vishnu Rao and national record. जेवलिन थ्रो के साथ साथ यहाँ पर ट्रैक पर भी तैयारी हो चुकी है 400 मीटर हर्डल्स की। 400 मीटर हर्डल्स का फाइनल आयोजित होने जा रहा है। फिलहाल बिब नंबर 185 दिशा नेलवाड़े कर्नाटका की, सेकंड राउंड। और ट्रैक पर पुनः हम हाजिर हैं 400 मीटर हर्डल्स गर्ल्स अंडर 18 का फाइनल लेकर। लाइनअप यहाँ पर है, लेन 1 में है रामेश्वरी गोंड ओडिशा, 2 रिया दिल्ली, 3 ज्योतिका एम केरला, 4 नूरप्रीत कौर पंजाब, 5 मुस्कान हरियाणा, 6 कृतिका एस तमिलनाडु, 7 पूनम गहलोत राजस्थान एंड 8 राधाबेन गोबाभाई गुजरात। Yes, watch now for the lead leg action. That's the important aspect in the 400 meters hurdles. While the principle of the whole learning continues, the emphasis is always shifted on the lead leg. First, by using several preliminary exercises for these young girls. Keep up the high running speed, which is what these girls are employing now. Avoid the hesitation. That's extremely important. In the center, Noorpreet Kaur and Muskan. 4 is Noorpreet Muskan. In 7, Poonam Gehlot, Rajasthan. They are at the far end, having finished the back straight. Will now approach the 100. This is where the cheese will be separated from the chalk in the inside now. In lane 3, Jyotika M. But it's still in the center. A sizable lead there taken by lane number 2, is it? Or lane number 3? 196, Jyotika M of Kerala takes 1 with Muskan of Haryana taking 2. काफ़ी अच्छी लीड के साथ यहाँ पर जो है फिनिश किया है ज्योतिका एम ने, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस में जो है काफ़ी क्लोज फिनिश हुआ है। इंतज़ार करना होगा ऑफिशियल टाइमिंग का, काफ़ी नज़दीकी रहेगी टाइमिंग में। पहले स्थान पर रही हैं ज्योतिका एम केरला की 1 मिनट 04.31 सेकंड्स के साथ। दूसरे स्थान पर हैं मुस्कान हरियाणा की 106.68 सेकंड के साथ। और तीसरे स्थान पर देखिए टाइमिंग 1 मिनट 06.75 सेकंड के साथ पूनम राजस्थान की 106.68 106.75। और उसके बाद फोर्थ की यदि आप टाइमिंग देखें 1 मिनट 06.76। काफ़ी नज़दीकी फिनिश रही है ये। Yes, surely Jyotika M had a command on the far side on the back straight. And before we shift to the javelin for girls, Jyotika
continued to maintain that momentum, and she surely emphasized the fact that all the drills that she had adopted came true today. 2, 3, and 4 in the 400 hurdles for the girls, coming up with close timings, but number one just ran home with a sizable lead. Manisha, Haryana, 11 starters in the javelin, the final. Nine, two absent. 39.37 for Varsha, Punjab, who now comes up. Slightly better conditions today compared to yesterday. 9:30, it's not all that hot. Morning, it was identical to yesterday. Yesterday was 23 degrees. This morning it was 24. And now it's 29 compared to 34 yesterday. So that those 5 degrees surely making a lot of difference for these athletes. It also makes a lot of difference for us because we're sitting in the open and we also need to concentrate as much to make sure that we don't falter in what we are talking about. The gallery, right side of the main terminal. लेगा हीट का सर उसका भी अटेंडेंस आने दीजिए अटेंडेंस आने के बाद पता सिचुएशन क्लियर होगा जेवलिन थ्रो गर्ल्स यूथ का ये फाइनल इवेंट और तीसरा राउंड यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है मुस्कान पटेल तैयार हैं उत्तर प्रदेश की पहला अटेम्प्ट रहा था उनका 34.03 मीटर्स का कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ रही हैं अपने आप को संभाला अंतिम क्षणों में कंट्रोल किया और उसी का नतीजा कि ये वाइट फ्लैग अप
यदि हम नज़र डालें मुस्कान पटेल की फिजिक के ऊपर, ज़्यादा हाइट उनके पास नहीं है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आपका कद नहीं है तो आप जो है विजेता नहीं हो सकते हैं। आवश्यकता है कि आप दृढ़ संकल्पित हों और अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार रखें कॉम्पिटिशन्स के लिए। और फिलहाल 280 राजलक्ष्मी तमिलनाडु। थर्टी 37.42 मीटर का पहला प्रयास था। दूसरा प्रयास उनका विफल रहा था और फिलहाल तीसरा जो उनका है उसमें भी वे फेलियर रही हैं। फिलहाल 329 अनुप्रिया रॉय 36.05 मीटर का उनका बेस्ट रहा है पिछले 2 राउंड्स में। 36.04, 31.42 और फिलहाल देखना होगा सक्सेस हो रहा है। वीरेंद्र, हम बात 36.02 मीटर्स का रहा है इनका हम परफॉर्मेंस बात अभी। कर रहे हैं 51, 55, 48 क्वालिफिकेशन, तो 36, 31, 34 बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा इनको। बहुत करना पड़ेगा। केवल एक एथलीट हैं वर्षा, जो कि पंजाब की हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट रहा था 42.01 का, जो कि 40 मीटर्स के ऊपर जिन्होंने थ्रो किया है। उसके अलावा फिलहाल अभी किसी का भी 40 टच नहीं किया बट है। इवन 42 इज नोवेयर क्लोज टू 51 और 55। बिल्कुल 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 नहीं है, काफ़ी दूर हैं हम हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स से। अब जब हमने बात की तो 47 पे पहुंच गए। वेरी गुड। 41.19 improving to 43.56 and further improving to 47.09। नवरीत कौर जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 47.09 का उनका ये थर्ड अटेम्प्ट रहा है। 48.61 जो क्वालिफाइंग है, शी मिस्ड इट सो फार बाय अ विस्का Disha। This is one event where you will have the girls and the boys being inspired by a gentleman who has, of course, made India proud, Neeraj Chopra. So the javelin surely should be something which the girls out here, along with the boys, would be aiming to perfection. And as the morning progresses, the sun would start beating down, making it all the more difficult for these girls to better their performances, to go towards that qualifying mark of 48.61. The national record or the meet record, perhaps at this stage, may not be of great consequence. It's the qualifying mark for the Asian youth, which might be of relevance, and that's what they would strive for. सभी लोग इधर आ जाओ। अभी भारत का नेशनल एजुकेशन का जो भी क्वालिफिकेशन है वो सबको रिक्वेस्ट करके आप लोग इधर आ जाओ।
We're now weeding out those who have not been amongst the top 8. We started with 11 in the javelin. We'll be down now to the final 3 throws for these girls in the javelin. The afternoon session has plenty of action coming up, but here at the moment the javelin final for the girls is on. We will also have, in case they are able to muster up all the teams, then 2 heats in the 1000 meters sprint medley relay. The first of them, Muskan Patel of Uttar Pradesh. Starts off with a clean throw. She's got the best of 35.55, which is what it was at the end of round 3. She's now gone down to the lowest, 30.84. So 35.55 down to 30.84. Naukreet Kaur, by far the most impressive, 47.09, her best in the 3. सभी स्टेट के कोचेस को निवेदन है कि आप एंटी डोपिंग अवेयरनेस सेशन में पार्टिसिपेट हो, अपने अपने एथलीट्स के साथ एंटी डोपिंग अवेयरनेस सेशन में पार्टिसिपेट हो. So 35.43 for Navreet. Disha, Delhi. But misses the throw there with the red flag coming up. Her best 36.63. But she's fouled on 3 occasions. Rajalakshmi, her best of 37.42. While she'd fouled throw number 2 and 3, she's done better in the 4th round. There's only one girl who's got over 45. Varsha, Punjab. She's been amongst the top girls out here in the javelin final.
36.74 for Varsha. Into the heavens for Ruchi. Well, she's done well in the fourth round, 43.66. Surely she should be in a podium chance out here. So they're all going through the motions of the javelin throw. .239 is Naurit Kaur, 35.43, but she now fouls the fifth. Ruchi by far has impressed us the most with 43.66 in this round. Muskan Patel 30.84 in round 3, 35.55 her best. Anupriya Roy. Missing her lead leg there. Anupriya, although she's got the white flag in her favor, I'm sure she's not achieved the distance which she would have loved to. Disha her best 36.63, 32.84 for Anupriya. Disha fouling her last throw. She's a southpaw. Would she be happy with that one? Rajalakshmi, Tamil Nadu, 37.2 to her best, doesn't leave her hand. Part of the game. राजलक्ष्मी आर तमिलनाडु की फिफ्थ राउंड आयोजित किया जा रहा है जेवलिन थ्रो में, और एक बार फिर रेड फ्लैग यहां नजर आ रहा है। जेवलिन इक्विपमेंट का प्रॉपर सही तरह से ग्रिप
और ग्रिप करने के पश्चात आपके बिल्कुल हेड के नज़दीक से उसको होल्ड करते हुए एक अच्छी स्प्रिंट के साथ पर्टिकुलर एंगल पर यदि आप थ्रो करते हैं, साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी का बैलेंस जो है, संतुलन भी कायम रखना होता है। और वर्षा पंजाब की, इनका भी असफल प्रयास रहा ये। रुचि हरियाणा, टिप नंबर 154। एक अच्छा थ्रो नजर आ रहा है यहाँ पर, बहुत सही समय पर रिलीज किया है इक्विपमेंट को और एक अच्छा डिस्टेंस कवर किया है। फोर्टी 44.72 मीटर्स। एक बार फिर विप नंबर 185 दिशा नेलवाड़े, 47.09 का बेस्ट थ्रो रहा है अभी तक के इनके 4 अटेम्प्ट में। ये फिफ्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ थ्रो। फोर्टी 47.09 का ही इनका जो है वही बेस्ट रहेगा। फिलहाल फिफ्थ अटेम्प्ट में कोई खास दूरी तय नहीं कर पाया इक्विपमेंट। नवप्रीत कौर पंजाब की, फिलहाल अभी तक जहाँ तक जो हमारे सामने डिस्टेंस के मेजरमेंट्स आए हैं, 48.61 जो क्वालिफाइंग मार्क है उससे नज़दीक अभी कोई भी नहीं पहुंच पाया है। 41.29 मीटर्स का रहा नवप्रीत कौर का ये फिफ्थ अटेम्प्ट। प्रत्येक वर्ष जेवलिन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाने लगा है हिंदुस्तान में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स के अंदर स्वर्ण पदक के साथ तिरंगे को लहराया था और उसके पश्चात जेवलिन थ्रो के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता और उत्सुकता उत्पन्न हुई, पैदा हुई सभी एथलीट्स के अंदर, और काफ़ी अच्छी तादाद में, काफ़ी अच्छी संख्या में जो फ़िलहाल खिलाड़ी हैं वो एथलेटिक्स की जगह जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी को प्रमोट करने के लिए एक किड्स जेवलिन का भी यहाँ पर साथ में इंट्रोड्यूस किया गया है इक्विपमेंट, जो कि नेट जैम में हम सभी को देखने को मिला था। एक ऐसा इक्विपमेंट, प्लास्टिक का बना हुआ छोटा सा इक्विपमेंट, और वजह उसके पीछे केवल यही थी कि जेवलिन जो इम्प्लीमेंट है काफ़ी कॉस्टली है इन सीनियर एथलीट्स के लिए, और जूनियर एथलीट्स के लिए एक ऐसा सस्ता इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कराया जाए जहां तक सबकी पहुंच भी हो और साथ ही साथ जो है जेवलिन के प्रति लोगों का रुझान भी और ज़्यादा पैदा हो। सिक्स्थ राउंड की ओर बढ़ चले हैं हम। जेवलिन
यूथ गर्ल्स के इस फाइनल इवेंट में। मुस्कान पटेल, उत्तर प्रदेश, 35.55 was her best. She made sure that the red doesn't really come up at any point of her throws, but she's not been efficient enough to get. So there you are, as I said, 34.05. सभी थ्रोअर्स का यही प्रयास रहता है, सभी फील्ड इवेंट्स के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सभी का यही प्रयास रहता है कि रेड फ्लैग रेज ना हो, वैलिड जंप हो, वैलिड थ्रो हो, वैलिड अटेम्प्ट हो। और इधर वन वन 104 दिशा दिल्ली की, देखती हैं अपने जेवलिन को क्या वो सही दिशा दे पाती हैं। Nice, efficient run up, but all that in vain. The answer is obvious on your picture frame there. अंतिम अवसर था उनके पास, ये लास्ट चांस था, 6th राउंड यहाँ चल रहा है और वह उन्होंने गंवा दिया। और राजलक्ष्मी आर तमिलनाडु की, जैवलिन थ्रो के अंदर जो एक बॉडी का मूवमेंट लास्ट समय जब वो इम्प्लीमेंट को रिलीज करने वाली स्टेज पर होते हैं, वो वाला जो एक पूरे शरीर को पीछे की तरफ बेंड करके और फिर पूरे फोर्स के साथ आगे ला के थ्रो करते हैं, वो वाले कुछ एक्शन की यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। निश्चित रूप से ट्रेनिंग की आवश्यकता है। 280 राजलक्ष्मी 37.49। वर्षा पंजाब से, नजरें बिल्कुल सामने सीधे अपने लक्ष्य की ओर। एक अच्छा रनअप, लेकिन प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। काफी कम फासला तय किया है जेवलिन ने। मेरे ख्याल से अभी तक जो उनके पिछले 5 राउंड रहे हैं उनमें शायद ये सबसे कम नजर आने वाला है। बिल्कुल 29.60 मीटर रहा है। और एक बार फिर दिशा नेलवाड़े कर्नाटका की ये एथलीट, $37.82 मीटर्स।
परफॉर्मेंस यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ जो मेजरमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं 35, 37, 40, 42, इसका स्टैंडर्ड यदि हम देखें जेवलिन के अंदर फिलहाल संतोषजनक परफॉर्मेंस यहाँ नजर नहीं आ रहा है। I am honestly disappointed. बिल्कुल I am बिल्कुल, honestly ये disappointed. बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने And वाली and बात है। and more so, Virender, is because every child today wants to become a Neeraj Chopra, whether it's a boy or a girl. बिल्कुल And when you are aiming for a Neeraj Chopra, then if you can't get towards anywhere close to the meet record or the national record, or the, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप national record break करो 55.19 का, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीट रिकॉर्ड 51.84 हासिल करो। कम से कम आप 48.61 मैं क्वालिफाइंग मार्क के नजदीक मैं तो कह रहा हूँ आए। 48.61 भी बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, जरूरत है यहाँ ट्रेनिंग की और ज्यादा मेहनत करने की। So this is one area where the 11 girls, the coaches will have to get back to the drawing board, as they say, iron out the minuses. हर एक में प्लसेस होते हैं, वो प्लसेस का फायदा उठाओ, माइनसेस होते हैं, वो माइनसेस को इरेडिकेट करो। बट ऑनेस्टली आई एम डिसअपॉइंटेड, यू नो, आई मे साउंड अ लिटिल हार्श, बट दिस इज वन इवेंट वेयर विच हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर। अगर आप जैवलिन से हटके बैडमिंटन की बात करो तो अगर साइना नेहवाल और पीवी सिंधु और श्रीकांत और कश्यप ने एक स्टैंडर्ड रेस लेके आए तो बाकी के लक्ष्य सेन आ गए, काफ़ी बैडमिंटन। तो वैसे ही आपको एक आइकॉन चाहिए। आइकॉन ऑलरेडी हमारे पास है नीरज चोपड़ा के रूप में, उसको सभी लोगों ने अपना आइकॉन भी मान लिया है और सभी अपने हाथ में जेवलिन थामने के लिए भी तैयार हैं। जेवलिन थामा भी है, परंतु जो परफॉर्मेंस की हम आज यहाँ बात कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत की, परिश्रम की, और साथ ही साथ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस। और इसी के साथ मिडले रिले, स्प्रिंट मिडले रिले 1000 मीटर का ये इवेंट, उसकी पहली हीट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। पहला चेंज ओवर 100 के पश्चात सीधे 200 की ओर दौड़ेंगे ये। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं 1000 मीटर स्प्रिंट मिडले में। I like this innovation. You know, it brings so much of glamour to the relay standard 4x100, 4x400 अभी भी है, लेकिन मेडले में जो चार्म है, जो मैजिक है, जो कंपटीशन होती है, जो वेरिएशन होती है, जो इनोवेशन होती है, वो देखने में बहुत मज़ा आती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ एक मिक्स रिले भी है जिसमें मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन रहता है टीम का। और ये लास्ट है 400 मीटर का लास्ट चेंजिंग ओवर ऑफ द पैटर्न। और यही जो हम मेडले की बात कर रहे हैं और मिक्स की बात कर रहे हैं, a similar thing has been adopted in swimming also, because you have to start innovating now. अगर वही अगर करते जाएंगे तो जो एंथुसियाज्म है व्यूअर्स के पास, स्पेक्टेटर्स के पास, वो कम होता है। बिल्कुल, एक समय था जब 400 मीटर रिले और 100 मीटर रिले जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इवेंट माने जाते थे, लेकिन यदि अब हम देखें तो ये मिडले रिले के द्वारा जो है उनको कहीं पीछे छोड़ दिया गया है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रिलेज अभी आज की तारीख में एथलेटिक्स के अंदर फिनिश करते हुए पहली हीट। दो हीट आयोजित की जानी है मिडले रिले की। So Andhra Pradesh 2 minutes 32, Karnataka 2 minutes 46, Haryana 2 minutes 70, Tamil Nadu 2 minutes 1.53, Madhya Pradesh did not start.
So yes, variation is the spice of life. Innovation is what the world wants in anything that you do. अगर आप मुझे पता नहीं कि ये एग्जाम्पल सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे अंदर एक ज़माना ऐसे था कि यहाँ पर साउथ इंडिया में सिर्फ एक मसाला डोसा हुआ करता था. अब आपके पास शेजवान डोसा है, अब आपके पास मंचूरियन डोसा है, अब आपके पास और कुछ डोसा है. वैरायटीज बढ़ गई हैं. तो नहीं, कहने का मतलब है कि इनोवेशन हो गए हैं. लोग आज अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, इनोवेशन चाहते हैं, और वो इनोवेशन एथलेटिक्स में भी पहुंच गया है. अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स को एक्टिव रखना है, हॉकी में देखो चेंज हो गया. पहले 35 मिनट के 2 हाफ्स हुआ करते थे, 70 मिनट के. एंड वेरी इंटरेस्टिंग, 2024 में Olympic Games will feature repechage rounds. In fact, in some of the track and field events. This was announced way back in 2022. The repechage rounds will give more exposure to the sports during the peak Olympic period and will be carefully scheduled to ensure that every event on the Olympic program retains its share of spotlight. And this has come from none other than the World Athletic President, Sebastian Coe. So, what does this actually mean? Very quickly to tell you before the next round starts. In the first round heat on the track, a certain number of athletes will guarantee their progress to the second round by finishing in the automatic qualifying position. For example, the top 3 finishers in the heat, regardless of their finishing timings, will do that. So here you are, one more innovation. And athletes who do not qualify by finishing in the automatic qualifying in round 1 heat will have a second chance. I'm repeating, they will have a second chance to qualify for the semi-finals by participating in the repechage heats. Repechage, wushu, boxing, martial arts में होता है, और अब athletics ने ये अपनाया है, which is I'm saying it's an amazing move. बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर शेयर की है दर्शकों के साथ. और फिलहाल हम तैयार हैं 1000 मीटर स्प्रिंट मिडले रिले के साथ. सेकंड हीट ओडिशा, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली. This is the last event of the morning session. The first 100 meters, this is where the pace will be set, or the tempo will be set. Baton exchange, extremely important. Virender, we've seen crack sides, big sides like the United States, 4 good runners, but they have faltered at the baton exchange, either outside the zone or drop the baton. You can have 4 good athletes, but if your understanding, communication is not good, it doesn't help at all. जी हाँ, यदि आपका बैटन एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, सही टाइम के साथ नहीं हुआ, और का मूवमेंट आपका वहाँ पर यदि जो है वो ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. और ये लास्ट इवेंट, तीसरे और अंतिम दिन के मॉर्निंग सेशन का 1000 मीटर स्प्रिंट मिडले की सेकंड हीट. और ये लास्ट एक्सचेंज होने जा रहा है, और 400 मीटर का पूरा लैप इन्हें कवर करना होगा. ओडिशा, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र एंड दिल्ली. हंड्रेड, 200, 300 एंड 400 ये कॉम्बिनेशन है इसमें 1000 मीटर स्प्रिंट मिडले रिले में. लास्ट कर्व को कवर करते हुए सीधे 100 मीटर स्ट्रेट की ओर. और फिलहाल लेन 3
और इसी के साथ मॉर्निंग सेशन के हमारे ये इवेंट्स यहाँ पर संपन्न होते हैं। तीसरा और अंतिम दिन है और कुल 16 फाइनल्स आज यहाँ पर आयोजित किए जाने थे, जिसमें से 7 फाइनल मॉर्निंग सेशन में आयोजित किए जा चुके हैं। 9 सेमीफाइनल जो हैं वो आफ्टरनून सेशन में आयोजित किए जाएंगे। एक रोमांच भरी शाम रहेगी, रोमांच भरा सायकालीन सत्र रहेगा, जहां हमको हाई जंप, जेवलिन, ट्रिपल जंप के साथ साथ 200 मीटर के फाइनल्स और एक और एक्साइटिंग इवेंट 2000 मीटर स्टीपल चेज देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस मैदान से हम आपसे फिलहाल विदा लेते हैं और दोपहर पश्चात सायकालीन सत्र में पुनः आप सभी के बीच हम हाजिर होंगे 2:45 पर, 2:30 पर मैदान पर होगा हाई जंप और ट्रैक पर होंगे 200 मीटर